Yes, sir. Yes, sir. So on the results, actually, अच्छा दिल से बात करते हैं क्योंकि टाइम कम है. Obviously, numbers are going to be bad. They are bad. I feel, and I'll come to specific point. I feel the bigger question we need to ask ourselves why we are not able to see the maths. There are only two, three numbers: revenue, Q on Q, Q on year on year, and profit. वो भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो लाइक वी नीड टू क्वेश्चन आवर ओन बायसेस. So with that, sir, simple. This IT results is the first. So IT has always been more globally connected, obviously, and they're seeing the hit first. The everything bubble, as Jeremy Grantham called it, blew up 2021, and first the SPACs, yeah, wo monkey JPEGs went off. Then so overall, everywhere economies are shrinking, and it's the same in India. Now, a lot of data has come out in the last 2 3 weeks on consumption by lower class, middle class, upper class is now seeing a reduction. तो कंज्यूमर सेक्टर में भी तंगी आएगा, ड्यूरेबल्स में आएगा, हर एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल सर वेयर आई डोंट नो अबाउट दीज केमिकल्स एंड capital goods guys, stocks or companies. But anything which is consumer facing, results are going to be worse. So for people who's wondering, inflation कम हो गया. अरे inflation कम हो गया means पहले 100 था, 100 का 120 हुआ 20%. So 120 का 130 हुआ. So that's only 8%. But so it means inflation's come down, but the price has gone up. So the volumes are shrinking. Oil has not reduced much. It's now back to where it was last quarter. So all companies are struggling, and the shocking part is I think where some companies didn't warn us, and like Infosys, I feel they didn't warn us. They knew numbers are going to be bad. They gave us a very different picture as recently as 3 months ago. That's my quick overall sentiment and view, sir. Yes, Sachin. Sachin Patel, please unmute and speak if you want to speak. Hello, am I audible? Yeah. Hello. हाँ बोलिए. Hello. हाँ बोलिए ना. We can, we can hear you. Senior son, you can hear me. Yes, sir, I can hear you. Sachinji, we can hear you. Please speak up. I think his connection is weak, sir. It's now switched him to listener. Anybody else? The problem is somebody had requested that 7 o'clock is the iftar. So if you start after 7, so I'm taking questions up till 7. Yeah, Nirav bhai. हाँ, गुड इवनिंग सर. तो Good ये evening. जो रिजल्ट सीजन सर अब स्टार्ट हुआ, इन्फोसिस के बहुत ख़राब रिजल्ट आए और टीसीएस के भी ख़राब रिजल्ट आए. तो मतलब जैसे मैं सुन रहा था श्री जी की बात कि अभी अब रिजल्ट और सबके ऐसे ही ख़राब आएंगे, तो फिर मतलब इस हिसाब से मतलब इंडस्ट्री जो आप बताते थे, इंडस्ट्री सेक्टर वो भी इतना बुलिश नहीं रहेगा और एक साल ऐसा मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा क्या कहते हैं. और आईटी सेक्टर जो बॉटम आउट हो रहा है तो वो ले सकते हैं अभी. अरे आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई? क्या लेने का है तुमको?
आपको मालूम है कुछ क्या होने वाला है 1 साल के बाद में? नहीं पता सर, है सॉरी क्या? सर। तो क्या लेना वो सब इंस्टीट्यूशन बेचते हैं और वो तुम्हारे जैसे लोग लेते हैं। क्यों पैसा बर्बाद करते हो अपना? अब पैसा प्यारा नहीं है क्या? ये जो थियरी है ना 5 साल ना 10 साल, वो बोगस है। हाँ सर। ऐसा वक्त कभी आया नहीं था इंडियन मार्केट्स में और आएगा नहीं 20-30 साल तक। यहाँ पे सब लोग सब स्टूडेंट्स आवाज कम है। हेलो, और नीरू भाई आप क्या करते हो? आवाज सर कट रही है सर आपकी। हेलो नीरा भाई, सर इज आस्किंग आप क्या काम करते जी, हो? मैं डेंटिस्ट हूँ सर। प्रोफेशनल। तो हेलो, मेहरबानी करके अभी शेयर मत लो, अच्छा लगेगा तो। वो जी सर। टाइम है और अगर आपको मालूम है कि अगले साल क्या होने वाला है, आप जरूर ले लो। नहीं सर। हमको भी बताओ कि अगले साल क्या क्या हम्म। अगले साल ओके सर, थैंक यू और कुछ सर। नहीं। बस थैंक यू सर। Yeah, who's next? Rose. बोलिए ना, who means anybody can speak. MNS or yeah, cool. Hello, am I audible? हाँ जी, बोलिए MNS जी। Good evening, Sharad sir. So basically, I have two questions. My first question is ki, so how is it to like if we invest in gold ETF, is it like ये सही रहेगा to invest like whatever salaries we get, like to invest a good chunk of that in gold ETF? So because physical gold is not viable to a lot of people. And my other question is regarding what do you think will be the results of chemical stocks? Will they be good, or what are your views? Thank you. Gold is in fashion. You can buy, and I think it will go up to 70. Okay, so that's about chemical results. They will be extremely good, but the result will be very bad. This is a perception के result अच्छे हैं। आ जाने दो ना, आप 50 रुपए ऊपर ले लेना। ठीक है, थैंक यू सर। Speaker. Yes, good evening, Sarath sir, and all team members joining for the first time to your space. Couple of basic straight questions. Like one of your colleagues said about Infosys warning they should have provided earlier. एक फर्स्ट क्वेश्चन है सर, इसका जो वैल्यूएशन आईटी का करते हैं 24 टाइम्स 22 टाइम्स, अभी इन्फोसिस में और क्या मार्जिन है? दूसरा, फ्रॉम ट्रेडिंग परसेप्शन, कुछ डीप इन द मनी पुट्स होल्ड कर रहा हूँ बिफोर रिजल्ट्स, तो मंडे को जो भी एडीआर का 8-10% डाउन गया, वैसा ये सब जो हो रहा है सिनारियोस, उसके बेस पे क्या लग रहा है आउटलुक इन्फोसिस का? थैंक यू सर।
yesterday night the ADR closed at 1540. It works out to 1260. So that is the outlook. And what was your other question? Yeah, that will be that's helpful, sir. Holding 1300 puts some quantity, sir. 8 rupees around. Thank you, sir. So how come it is deep in the money? It's totally out of the money. Anyway. I mean, choosing out of money having very last quantity and very less amount. That's why I chosen this 1300. Otherwise, I mean, could have gone for this 1380 or 1400 kind of. So No, that is that's all why right. I took on this. No, that is all right, dear. What I'm trying to say, 1300 was not deep in money puts, your money puts. I'm, uh, I'm correcting you for the terminology. Yeah. Sorry, sir. 1300 is not too far away. 6 to 7% away from the current market price. Yeah. Anything else? Enjoy your profits. बोलिए उस Cool G, you can unmute and speak, sir. हाँ, cool G आप हैं? हाँ. Sir, one more question, if you don't mind. The theory of dragging IT index down and banking up move, that is nicely shaping up to balance Nifty stocks and all. So we understand banking, loan growth, NIMs and all, margin upgradation and all those. How long that cycle will continue for banking sector? I mean, there has to be some point where this loan growth has to moderate and NIMs has to moderate based on the RBI policy pose and all. So can you color on that, sir? I'll wait for okay. Sir, your voice is breaking, sir. You could not hear me at all. वो इंटरप्टेड आ रहा है सर, वो डिस्टर्बेंस के साथ आ रहा है आपका वॉइस. Recharge is over. अभी आ रहा है भाई. That's perfect now, sir. You please proceed. Yes. So banking. Tomorrow is the HDFC Bank results. So we'll come to know what is what. And we'll take a call thereafter. But anyway, I don't play banking. Useless. Fine, sir. Thank you. Sharad Bhai, good evening. Good evening. Sharad Bhai, I wanted to know your view on Eicher Motors and Bajaj Finance. Sir, I have today's space is only for results यार. फिर वो forecasting में नहीं जाना है मुझे. ठीक है सर, कोई बात नहीं. Because I don't know ABCD of that. Okay sir, no problem. Yeah. Who's next? Brajesh ji, you can unmute and speak. Ask.
Chandresh ji, you can unmute and ask. यस गुड इवनिंग ईदी शरद सर ऑल बस यही डिस्कस करना था ये इन्फोसिस का शरद सर ने जो बोला एडीआर के हिसाब से तो राइट मतलब 1260 1270 पे खुल सकता है शायद पर आईटी सेक्टर ठीक है अभी तो मुझे भी वीक लग रहा है बस दैट्स इट Yes, Sachin. Hello, sir. Am I audible? Yeah. So, sir, one question मेरे को ये भी पूछना था कि जो सर commercial paper it is considered as bad debt. Regarding Commercial papers. हाँ तो सर वो bad debt की तरह consider करेंगे आप? क्यों किसके अंदर समझा नहीं आपका सवाल सर मैं बोल रहा हूँ कि जो commercial paper release करती है ना कंपनी तो सर वो जो डेट होता है वो उसको हम बैड डेट की तरह कंसिडर करते हैं कि इट्स गुड good unless it is unpaid, it's not paid on time, then it's bad debt. Otherwise, it's okay. ओके सर और सर आईटी आपको क्या लगता है मुझे तो सर बहुत और नीचे लगता है मतलब कि ये और नीचे चला जाएगा मैंने ट्वीट मारा था कि 2019 का जो भाव था उसका 2/3 हो जाएगा और कुछ नहीं सर अभी ओके थैंक यू खाओ Gaurav ji, you can unmute and ask your question. Hi, good evening to all speaker and listeners, especially to Sharad sir. सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था क्या यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसा लगता है कि टॉप आउट कर गया है बैंक निफ्टी यस सर दैट इज द मोस्ट asshole product in India यार Actually, sir, I'm asking you this thing because I have shorted 4 futures on this Thursday of Bank Nifty. और मेरे चार्ट्स पे तो बैंक निफ्टी टॉप आउट हो गया है तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि क्या आपका भी ऐसा कुछ व्यू है नहीं वो थोड़ा बहुत इंसल्ट ले लोगे मेरे से नहीं सर इंसल्ट तो नहीं ले पाऊंगा वो छोड़ दो फिर ऐसा अच्छा ठीक है सर थैंक यू जिसको कुछ नहीं आता ना वो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शंस खेलते हैं ओके नहीं एक्चुअली मैं ट्रेडर फुल टाइम नहीं हूँ लेकिन जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आई एम हार्डली ट्रेड मतलब आई एम इन्वेस्टर ओनली आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट्स ओनली लेकिन कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका बेनिफिट लेने का ट्राई करता हूँ वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ थिंग आई एम नॉट अ डेली ट्रेडर ऑन लाइक नहीं तो ये जब टीसीएस का रिजल्ट आया इट वाज अ श्योर शॉट कि इन्फोसिस का भी बकवास आएगा ओके So instead of wasting your time in Bank Nifty and Nifty, you should indulge in stocks. No, if you have some reasonable knowledge. No, if sir. you don't have knowledge, then it's okay. No, sir. I really don't have any knowledge of trading a stocks. Actually, never traded a stock. I only traded index only. So I can guarantee to you, at the end of a year or 2 years, you will WhatsApp me कि I have lost all my money. I really appreciate, sir. मैं भी इसी point of view से है कि trading is not a good thing. I know that. नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है भाई साहब आपको मैं मेरा व्हाट्सएप दिखाता हूँ कम से कम 30 आदमी लोग लिखा है कि want to die ये वो कोई मतलब नहीं है बॉस दिस इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस उससे अच्छा समझो कि आप निफ्टी खेलते हो या ऑप्शंस खेलते हो
उतना पैसा फैमिली को दे दो ना भाई, बाजार को क्यों देते हो? I understand. और एक दूसरा बात है गौरव भाई, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, Mm-hmm. the moment you enter into a trade in Nifty and Bank Nifty, Mm-hmm. whether long or short, I am not talking about direction, Mm-hmm. your head becomes very heavy. That's true. That's absolutely true. अब पूरी दुनिया का भार आपके दिमाग में आता है. Absolutely right, sir. फिर आप टीवी पे देखते हो कुछ नेगेटिव. अगर इफ यू आर शॉर्ट, You're right, sir. you would want to see some negative news. अरे उधर अर्थक्वेक हुआ ये. And if you're long, so you want good news. Definitely. So, how old are you, sir? I'm 36, sir. So, if you will believe me, Mm-hmm. stop this trading in indices. Okay. Because believe me, I have 30 or 40 WhatsApp where people have lost everything in trading in Nifty, Bank Nifty, and mainly options. Right, sir. Understand that. Now, if you say you are playing Bank Nifty, if I will ask you the weightage of ICICI Bank, Mm-hmm. how much it is in Bank Nifty? Maybe 10%. Maybe, right? You are not sure. No, I'm not sure, sir. Yeah. So when you don't know the basics, why do you play? See, Right. I'm talking for your benefit. I care two hoots if you play. Mera kya jayega. I know that, sir. I know that. But You're I feel I'm responsible over here. I would Mm-hmm. want to din into your head that please, okay, chalo, you play, but only after having full knowledge or some knowledge. Yes. What you are doing is gambling, Right, sir. I and totally agree. gambling doesn't give any returns Mm-hmm. because when you buy it at a premium of 200 points. Mm-hmm. When you sell at 50 points premium Right. और डिस्काउंट. तो ऐसे ही आपको तो मामा बना दिया. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर. देखिए, आई एम 65, यू आर 36. I am in no competition with you in any which way. Okay. But my experience is this is a lethal instruments. Right, sir. Nifty, Bank Nifty, and options. Futures per se are also very lethal. Definitely. Unlimited losses. But I have a way to trade using the same instrument, but lot of modification. Okay. Now, suppose you shorted Bank Nifty, you should have bought a call. You mean to say hedging a position? No, hedging is something different. Okay. Yeah, you can say hedging. Okay, chalo. Let's not argue about terminology. So once you buy a call, three things happen. First of all, your margin requirement reduces by 1/3 or 2/3. Right. Secondly, the system is in. Sorry, the stop loss is in the system. Definitely. And thirdly, you will stop watching TV because your mind is at rest. That come what may, nothing will happen to you except for this much loss. Right. So
I would suggest you want to gamble, but gamble with caution. Gamble Right. with proper stops in place. Okay. Mental stop losses are useless. Hmm. वो स्टॉप लॉस आएगा फिर तुमको लगा नहीं 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 और मैं बढ़ाता हूँ नहीं 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 और ऐसा मत करो यार. ठीक है सर. I will tell you two instances. Hmm. Somebody called me up and said he is long Infosys, Hmm. whatever quantity, and the ADR is down. Hmm. So I told him, boss, 3 steps down, puts were available for 15 rupees. Hmm. Why did you not buy? Hmm. So he thought, no, he said, I thought it's a waste of money. I said, okay. But the point being, whenever you think it's a waste of money, you should take it. Or you should always take it. Now, Hmm. I'm long, I'm short Lal Path Lab. Hmm. 30,000 or 15,000. 15,000. Now, I shorted at 1835. Hmm. And price went up to 1910. Okay. But I had purchased calls of 1900 at 12 rupees. Okay. Okay. And I had purchased more, Hmm. 20,000 or so. So I knocked it off Right. at 50, 55. Hmm. And I purchased 2100 calls. वो तो नहीं होने वाला है, but margin benefit. So Hmm. whenever you have such a position Hmm. that it is going against you, the stops in the system will help you a lot. Right, sir. I got your point. Got it, sir. And if you are not whatever you are, if you are Hmm. short Bank Nifty one lot, Yes, sir. buy 2 calls. Acha. Okay. Okay. Hmm. Hmm. This is the way to play that this future and options game. This is the way in life also, boss. Hmm. Hedge your bets. Okay. I got it, sir. I got it. Yeah. Thank you. Now I can insult you or no? No, sir. Thank you very much. But think I am your uncle, father, whatever. Yes, sir. Stop playing this. No, no, no. Definitely. That's my promise to you. ये जो है ना, ये Mhm. जो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, Mhm. फ्री में बाजू वाले से सिगरेट मांग के पीते हैं, उनके लिए है सर, आपके ठीक लिए है. नहीं है. Okay, sir. Okay. Thank Thank you, sir. Thank you very much. you. Yeah, Virendra, please. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर वो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअली इसके जवाब तो आपने इस टॉक में दे दिए, सारे के सारे मिल गए मेरे को. एक छोटा सा यही क्वेश्चन था सर मेरा कि मैं जब फ्यूचर शॉर्ट मारता हूँ और उसे अगेंस्ट एक कॉल लेता हूँ, तो जो मैक्सिमम मेरा लॉस है अगर मेरे अगेंस्ट जा रही है वो कॉल, मतलब वो सौदा अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो जो मैक्सिमम लॉस है वो चला ही जाता है, बीच में उसको काट ही नहीं पाता हूँ मैं. मतलब एक हैज डूं तो मेरे को चिंता तो रहती नहीं है. तो वो क्या है कि वो मैक्सिमम लॉस चला जाता है उस कंडीशंस में. प्लस सर मैं एट द मनी, मतलब लाइक जो भी जहाँ फ्यूचर शॉर्ट मार रहा हूँ, जहाँ स्पॉट चल रहा है वो एट द मनी कॉल उसको हेज करता हूँ एट द मनी से. तो मतलब उसका कुछ आप सजेशन दे सकते हैं कि एट द मनी इज गुड, और कि मेरे को कोई ऊपर नीचे जाना चाहिए कहीं पे? नहीं, आप if you will short or at the money, तो वो न्यूट्रल होगा, हाथ में तो कुछ आएगा नहीं दोस्तों.
हाँ चला गया लगा, आपके साइड में पोजीशन ज्यादा लंबी चली तो ही आएगा हाथ में, नहीं तो नहीं आता है नॉर्मली ना। अगेंस्ट चली जाती है तो मैक्सिमम लॉस लग जाता है फिर। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, ये वंस इन ब्लू मून होता है ऐसा। नॉर्मली ये આપણે હેજ ही रहता है, वो जल्दी इतना ऊपर नहीं आता है, लेकिन राइट, अपने भाग्य बराबर नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर। जैसे आपने बोला कि अब 1835 पे मैंने वही एक अभी आपने एग्जांपल दिया और 1900 का कॉल लिया, ठीक है, तो अभी फिर आपने वो ऊपर चला गया तो और कॉल बाई कर लिया, अब आपने सौदा काटा नहीं, तो वैसे मतलब मैं ये पूछ रहा था वो काटना चाहिए नहीं कि? नहीं 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 नहीं, मैंने सौदा नहीं काटा। मुझे ये सौदा मेरा ये 400 रुपया नहीं होएगा तब तक चलेगा। ओके सर, अपने टेस्ट मैच वाले भाई। ठीक तो है सर। जिद और एक बात समझो वीरेंद्र भाई, जी सर। इस सट्टे बाजार में है ना, जहाँ पे भी नफा दिखाना ले पकड़ के, छोड़ना ओके, मत। बट सर फिर वो अगर प्रॉफिट राइड नफा नहीं हो छोड़, पाता है, हाँ प्रॉफिट राइड नहीं हो पाता है फिर। हेलो, हाँ बोलिए भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ सर वो प्रॉफिट फिर राइड कैसे होगा, मतलब जैसे नफा आपने ले लिया देन उसके बाद में और वो आपकी दिशा में गया तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि भैया तो प्रॉफिट तो राइड ही नहीं कर पाया मैं। नहीं नहीं, आई मेड अ जनरल स्टेटमेंट वीरेंद्र। मैंने बोला ना, ये लाल पेथ लैब है, जी सर। वो 400 रुपए के पहले मैं नहीं लूंगा, ओके, तो आई एम राइडिंग दैट, पर एट द सेम टाइम ऊपर जाता है वो तो प्रॉफिट ले लेता हूँ वो कॉल बेच के। ओके, 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 ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? सो आई एम फ्रॉम जयपुर। आई शाबाश, मिठाई भेजो वीरेंद्र भाई। जी सर, जरूर। थैंक यू And सर। if यस। you have any specific question, हम्म, my WhatsApp number is on my profile. You can contact me. श्योर सर। मैंने सर डीएम तो किया आपको काफी बार, लेकिन वो व्हाट्सअप नहीं किया कभी, मैं करूंगा सर इसको। आगे सर एक छोटा सा और अगर आप जवाब देना चाहें तो, लाइक मैं आपकी स्पीच से काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ और मतलब मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आपसे सीखा है, तो मैं जानना चाह रहा था कि वो आप जो बोलते हो कि भाई इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी देन आई कैन लाइक मेंटर यू, तो वो सर कैन यू गिव सम लाइक आइडिया कि कितना वो प्लेंटी ऑफ मनी होना चाहिए? आप WhatsApp कर दो ना भाई, काय जी को। सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। Sir, I'll take your leave, sir. या All right, thanks. अब बोलिए राकेश भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमको सर भाई आप, मुझे पता है आपको ये एफएनओ पसंद नहीं है, बट लुक्स लाइक यू आर इन अ गुड मूड टुडे, इसलिए जस्ट जो गौरव सर का आपने जो फॉरवर्ड। ये आपका आवाज कट रहा है भाई। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर अभी वो बराबर सुना। आप, मुझे पता है सर आपको पसंद नहीं है एफएनओ और ये सब डिस्कशन, बट लगता है आज आपका मूड अच्छा है, तो मैं जस्ट पूछ लेता हूँ कुछ, तो मुझे डाउट था एफएनओ में। गौरव सर का आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन का आपने जवाब दिया हेजिंग के बारे में, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज जानना था, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि ये कुछ लोग जो नेकेड खेलते हैं एफएनओ में, स्पेशली स्टॉक्स में, तो अगर वो स्टॉक बैन में चला जाता है एफएनओ का, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं सर? इफ यू कैन प्लीज टेल। थैंक यू सर। बैन में चला जाता है सर एफएनओ बैन में अगर चला गया आपने पोजीशन लेने के बाद, तो कैसी फट सकती है वो?
नहीं, अगर कोई भी स्टॉक बैन में जाता है ना, whether you are short or long, square up your हाँ position. Because most of the time this ban is done by यस operators, यस यस and you should avoid all such stuff. एब्सोल्युटली ये डेल्टा वेल्टा एक कचरा पट्टी है, ये 20 रुपया भी भाव नहीं होना चाहिए, बट वो पकड़ के रखा है। करेक्ट करेक्ट दैट्स व्हाट सर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑडियंस। और देखिए ये शेयर बाजार हाँ है, सर यहाँ पे गुना फरेब चक्कारी मक्कारी सब चलता है। ऐसा मत समझो कि सब कुछ स्ट्रेट है, इंक्लूडिंग टाटा भी चोर है। मैं बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, सब लोग को मिर्ची लगेगा, बट मेरे पास में प्रूफ भी है। नहीं सर वी बिलीव यू सर, कोई इशू नहीं है इसमें। इन्फोसिस है, क्या तरीका है? अभी तुम 3 महीना पहला बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अभी ऐसा हो सर यही चीज सर HCL टेक ने भी की थी सर, रिजल्ट डिक्लेयर किया तो भी बहुत अच्छा डिक्लेयर किया, और बाद में 14 दिन के बाद कमेंट्री दी कि बहुत ही खराब है, और वो 8% गिर गया सर, लास्ट दिसंबर की बात है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, ये बाजार ही ऐसा है, चोरी मक्कारी, तो उसमें कुछ वो अजीब समझने का नहीं चलता है। आपको अपना पिछवाड़ा संभाल के चलना है, पीरियड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, एंड प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क फॉर पुअर souls like us who get fooled by many YouTubers and influencers and God knows CNBC and G News. नहीं, I don't have any paid services. नहीं सर, वैसे नहीं, this is voluntary thing which you are doing, and I'm following your space since a long time now, and जिस तरह के गप्पे भी होते हैं आपके स्पेस में बहुत अच्छे होते हैं सर, मजा आता है। नहीं, और दूसरा बात है, बहुत लोग गंदा लिखते हैं सर, उनको इग्नोर करो सर। मुझे नहीं, वो मैं ब्लॉक ही मारता हूँ उनको। पर क्या है, क्या तुमको सच्चाई एक स्पेस बताओ जहाँ पे आपको सच्चाई मालूम पड़ती है। एब्सोल्युटली सर, मिरर कोई दिखाता ही नहीं ना, प्रॉब्लम वो है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Yes, who's next? Sir, you can remove me from speaker. Thank you, sir. Yeah. हेलो, गुड इवनिंग चलो सर। गुड इवनिंग। चलो सर, कल परसों से थोड़ा ये मैं आपसे टॉपिक से हट के एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कल की बात है, कल जो है बड़ा ट्विटर पे बवाल मचा हुआ है कि फिनवेशिया ने बहुत सारे लोगों के ऑर्डर पुट किए, खुद ही से वो ऑर्डर लगाते चले गए और लोगों का बहुत लॉस हुआ है। कई लोगों ने डाला है कि उनका 95,000 का लॉस है, किसी का कुछ, किसी का। अब ये एक अलग से एक थ्रेड कहाँ से आ गया? आप तो मतलब आपने तो बहुत ट्रेडिंग की है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, कि ब्रोकर ने खुद ही ऑर्डर डाल दिया हो आपका और उसके बाद आपका लॉस हो गया और अगले दिन आपको मैसेज आ गया? नहीं। तो ये अब ये शुरू हो गया, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अब ये उनके ग्लिच हो जाते। देखिए, ये जितने भी ऑनलाइन वाले ना, सब बोगस है एक्सेप्ट ज़ेरोधा बेस्ट। तो अगर आप ज़ेरोधा में करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप कोई भी गहरा ब्रोकर आता है उसके साथ काम कर लेते हो। मैं जहाँ पे काम करता हूँ बहुत महंगा है, 30 रुपया पर लॉट ऑप्शन में लेता है और 3 पैसा फ्यूचर्स में लेता है। बट आई पे दैट एंड आई नो आई एम सेफ एंड साउंड। आप शेर खान में मेरे ख्याल से करते हैं। हाँ, हेलो, आप शेर खान में करते हैं? नहीं। अच्छा। तो लेकिन ये दादा, इस पर सेबी को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस तरह की जो हरकतें, कोई गाइडलाइन वगैरह बनानी चाहिए। जब वो रिटेलर को लेके इतना परेशान होते हैं, उन्होंने मार्जिन वगैरह खत्म कर दिया कि रिटेल जो है बहुत मार्जिन लेता है और फिर उसके बाद बर्बाद हो जाता है, तो इस पर भी तो उनको एक्शन लेना चाहिए कि मतलब
पैसा रखा हुआ है और अपने आप ही वो ब्रोकर ट्रेड किए जा रहा है, नुकसान किए जा रहा है, अगला आदमी हाथ भी नहीं लगा रहा है। ऐसे तो बड़ा रिस्क हो जाएगा कि पैसा भी कोई नहीं रख, मतलब जीरोधा के अलावा फिर कोई और चलेगा भी नहीं। ऐसे तो फिर ये तो खत्म है, फिर एक ही ब्रोकर। अरे कंपटीशन में सबको आना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन चोरी चकारी भी होने लगी इस तरह की इसमें। मतलब एक लॉस का तो डर था ही कि लॉस हो रहा है, लेकिन अब ये ब्रोकर वगैरह भी आके ये सब बेवकूफी ग्लिचेस देने लगे। पता चला ट्रेड ही नहीं हो रहा है, 9-1 घंटे तो ट्रेड ही नहीं, वो आप बटन दबाते रहिए, कुछ हो ही नहीं रहा, ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ना एग्जिट हो रहा है, ना कैंसिल हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। आदमी पागलों की तरह बैठा हुआ है, मार्केट कहां से कहां चला जा रहा है। सेबी इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता था? गजब है दादा, हिंदुस्तान है, अजीब ही है। मतलब पैसे की कोई किसी की परवाह ही नहीं है, सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेता। नहीं, बट गलती कस्टमर्स का भी है ना। ऐसा नहीं सुनिए, हाँ। ऐसा कचरा ब्रोकर के वहां जाओगे तो वो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से ये धंधे में है, वो मालूम है आपको? हाँ, फिल्मेशा तो खैर अभी नया है, लेकिन कल कहीं उसमें देखा गया ये चीज। कल धन में भी ये प्रॉब्लम आई है। धन ये भी खैर अभी लॉन्च हुआ है। खैर तो पुराने में तो वही है, बस ये जीरोधा वगैरह ही है। पुराने में या तो आपका आईसीसी डायरेक्ट ये सब है, शेर खान वगैरह है। अब लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये फ्री वाले हैं, ब्रोकर फ्री वाले ब्रोकर है, तो इनके यहाँ करा लो, कम से कम फ्री पैसा तो नहीं बर्बाद होगा ब्रोकरेज का। वही मैं आपको समझाया पहले है। वो जिधर आपकी नजर ब्रोकरेज पे गई, बस वही फेल हो जाता है, या आदमी फेल होता है। चलिए, एनीवे, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या हु इज नेक्स्ट? शरद जी नमस्कार। नमस्कार। शरद जी, आपका स्पेसेस पे मैं बहुत समय से आते रहा हूँ, करीब 1 साल से ऊपर हो गए हैं। और मैं मतलब इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मुझे ट्रेडिंग आता ही नहीं, एफएनओ मुझे नहीं आता है, तो जो मुझे नहीं आता है वो मैं नहीं करता हूँ। और एज ऑन डेट करीब मेरे पास 20 मिलियन का पोर्टफोलियो है, तो मैं कुछ पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा कि ये ठीक है या इसको और भी कहीं से हेज करने के लिए कुछ जरूरत है। सर एक काम करो ना, व्हाई आर यू रिवीलिंग? ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डालिएगा, आइएगा, बात कीजिएगा। ओके ओके, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। SC होल्डर, एनीबॉडी? हेलो सर। या सर, ये कल जो फिनवेशिया में जो ग्लिच आया हुआ था सर, उसमें मेरा जो तो छोड़ो यार, हमको नहीं। हाँ, बोलिए। सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा जो फंड है मेरा 45,000 था, बट अभी माइनस में वो चला गया, 90,000 का लॉस हो रहा है। और तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए इसमें, कुछ सजेस्ट करते हैं आप तो। NSE में चले जाओ। NSE में? जी सर, वो तो मेल कर दिया अभी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सर इसमें क्या कुछ रिकवरी का सर कितना प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है मुझे? पूरा है। और अगर आप चाहो तो मेरे आदमी भेज दूं तेरे पास में, तू लेके जा उसको, वो ब्रोकर के वहाँ। जी सर, थैंक यू। तो आपको वो कौन बोला था कि इधर अकाउंट खोलने को? तो उसमें 0 ब्रोकरेज था, तो खुद से ही चला गया। गलती तो हुआ है सर, मान ही रहा हूँ। चलो,
Anyway, I'm sorry for it, but not really. Anyway, who's this D or unmute and speak? Derek. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, yeah. Sir, I just wanted to understand. Discussing about result, right? This high P ratio stocks, right? Polycab or SRF. So, I think long pending this P mean inversion, right? So, can we expect that after this quarter result, there will be, uh, I mean, uh, the valuation will go back to their mean inversion. Yeah, definitely. Okay, sir. Thank you. Yeah. Who's next? Hello. Hello. It's me, Smiling Buddha. आपसे बात हो गई है अभी, आपने बताया था कि आपको अलग से भेजने के लिए. हाँ. थैंक यू. Thank you. Sanket. हेलो. Yeah, Sanket. हेलो सर. सर एक्चुअली अभी आप मुझे बता सकते हो रिलायंस का अपडेट क्या आ सकता है? हम भी नहीं आएंगे. हेलो. कहाँ जाना है? नहीं मालूम नहीं है मुझे. ओके सर. Thank you. So no more. Now, results. TCS Infosys. If you observe, since last quarter, TCS was going nowhere. So it was a clear-cut sign that results would be bad. Infosys, a couple of quarters reached a high of 2000 and was hovering around 1400. Now that's 30% drop, and still people keep on buying. Now in last quarter also, Infosys never went up substantially. It was just down and down and down each day. But it is not perceptible to naked eye, or rather experienced eye could realize. The tape readers will realize that it is going down. So my thesis of Nifty 12,000, everybody gets rattled by it, but the fact of the matter is, many stocks are at those levels. And if you troll me for 12,000, it's okay. But please tell me what your portfolio has done for you. It's down 20, 30, 40, 50%. Generally, I'm not talking of specific. So, the point being, whatever might be the levels of the market, but your portfolio is down, you should be concerned about your portfolio and not concerned about the market levels.
What makes you think that Nifty is the barometer for you? No. Now, coming to Infosys results. It has an outstanding of 4 crore shares. 4 crore shares are there in futures. I calculated maybe 2.25 crore shares in put options. I'm sure nobody wrote puts. I'm sure nobody is long Infosys. हवा में ही है. People talk as if they have done nothing. But after this number that I have put on my profile, I get various messages. So, what we see on Twitter, you claim you are an expert and all, and you write to me you are in deep shit. So, you find almost everybody as a fraud on Twitter. Nobody speaks the truth. Okay, sorry, I weird. Infosys. Now, according to the growth numbers and all our projections, COVID low was 500 or 550. A company growing at 4%, why will you give a P of 24, 23? Why? 13, 14 is okay. So, just on PE metrics, Infosys will come down. TCS will not come down so much because 71% is held by Tatas. So the floating stock is very less. Now, it might stabilize at some level, but always there is a danger. Now, Wipro, HCL Tech, Emphasis, Tech Mahindra, Persistent, Coforge, LTIM, LTTS. Boss, if you are trading just by puts of next month and go to sleep, you will make good money. But shorting is an art. Very few people can do. So go to people who know this art, understand from there what is to be done, how you can do it without damage. Now, whatever I am saying, it can backfire also for whatever reason. So, and one thing I'm telling you, if TCS, Infosys, Wipro, etc. go down, only bet is HDFC Bank and HDFC, which can save. But otherwise, there is no hope. And the market might stabilize here for 1, 2, 3 days, but otherwise, it's going to go down to a great level. And another thing is, please, why do you invest in large caps? You won't get any returns. You invest in MNCs, you will get great returns. Otherwise, I don't see any go in this market.
Having said that, it's not that I don't have a portfolio. I have a huge portfolio. So don't think I am negative. I'm just cautioning you. Now, if I am cautioning you, it doesn't mean that for me everything is bad and this. No. There are good companies. I appreciate them. I like them. New concept. So I don't know what to say. Why people buy Infosys and TCS for what joy? If you really have money, buy Accenture. No, in USA. There are so many other companies are there in USA. You buy them. Your money will double table in 2-3 years. ये सब लेके कोई मतलब नहीं है. Yeah. अब बोलिए भाई. हाँ भाई बोलिए ना. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. हाँ बोलिए. सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो आजकल हर कोई बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश है, खासकर प्राइवेट बैंक्स के अंदर. पर मुझे पता है सर, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो रिजल्ट है जो क्वार्टरली प्रेजेंट किए जाते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब ग्रे एरियाज होता है जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होते हैं. तो मैं ये जैसे हिडनबर्ग का अडानी के लिए है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं भी कभी प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी जो जो एक बबल बनता जा रहा है भी. आप यूएस के बैंक्स को इतना वैल्यूएशन, बड़े बैंक्स को इतना वैल्यूएशन नहीं मिलता है प्राइवेट बैंक्स ऊपर. इंडिया में उन्हीं बैंक प्राइवेट बैंक्स को बहुत हाई वैल्यूड किया जाता है. तो इसके बारे में आपका क्या राय है सर? You are absolutely right. हाँ जी सर. आपने बराबर पॉइंट पकड़ा है. हाँ जी सर, भी ऐसा ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं भी, हाई वैल्यू उसी को दिया जाता है जिसका कोई प्रोडक्ट मोनोपोली होती है. जो एचडीएफसी बैंक कर रहा है वही आईसीआईसी कर रहा है, वही एक्सेस कर रहा है. आजकल हर कोई फिनटेक वही सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो वो एचडीएफसी बैंक 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये क्या 20 लाख करोड़ हो जाएगा आने वाले टाइम में? ऐसी प्रिडिक्शन जैसे लोग बोलते हैं एचडीएफसी 4,000 हो जाएगा आने वाले टाइम में. ये थोड़ा सा लगता है भाई ऐसी कौन सी ये चीज प्रोडक्ट देते हैं जो वो बाकी नहीं देते. नहीं, उनका मेन काम तो LIC अरे इंश्योरेंस बेचने का है ना, उसमें से इनकम ज्यादा आती है उनको. सर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मुझे पता है, इंडिया में मैं खुद यही काम करता हूँ. इंश्योरेंस से लोगों को ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेची जाती है. लोग इंश्योरेंस का मतलब है ये है भी हम 5 लाख लगा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है वो भी झूठ बोलता है, आपको 10 लाख मिल जाएंगे. वो 5 साल बाद भी उसको पूरा रिटर्न नहीं मिलता, वो फिर बैंक से खाते बंद, क्योंकि ये चलते रहते हैं. क्योंकि जो इंश्योरेंस बिजनेस भी एक तरीके का बहुत ऐसे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज है वहां पे एज ए इन्वेस्टमेंट और उनको रिटर्न के बेस पे दिया जाता है भी आपको 20% रिटर्न मिलेगा, 25% रिटर्न मिलेगा. एक्चुअली ये जो चीज सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है इंडिया में, ये चीज जो इंश्योरेंस का चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर खासकर. क्योंकि हम भी इंश्योरेंस बेचते हैं, हमारे ऊपर टारगेट का प्रेशर है सर भी, हमें इतना बेचता है. मैं भी एक रेपुटेड बैंक में जॉब करता हूँ, हमारे ऊपर भी टारगेट का प्रेशर है जी, आपने को इतना करना है. अब कस्टमर को जी हमें बोलना पड़ता है जी आपको 5 साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा. एक्चुअली में वो होता नहीं है, ऑन पेपर होता नहीं है उतना रिटर्न, और वो हमारे वो सैलरी का इशू है. पर मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो मैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहता हूँ, जो प्राइवेट बैंक्स को जो इंडिया में वैल्यूएशन मिल रही है, क्या आने वाले टाइम में उतनी ही वैल्यूएशन और उतनी ही प्रीमियम पे वैल्यूएशन होते रहेंगे? क्योंकि जैसे जैसे और कंपनियां आजकल जो गवर्नमेंट बैंक्स है उनकी भी टेक्नोलॉजी में वो उनके एप्स वगैरह भी वो डेवलप हो चुके हैं उनके अच्छे तरीके से. तो क्या एचडीएफसी बैंक को रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मेरा आपसे क्वेश्चन है भी, क्या ये जो आज के टाइम में जो 1500 का इसका जो 1600 का राउंड चल रहा है,
आने वाले टाइम में जो टारगेट हमें दिए जा रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो ट्विटर पे देते हैं 2500 हो जाएगा 2 साल में HDFC बैंक। क्या मालूम भाई, आप पागलपन की कोई सीमा नहीं होती है, समझे आप? देखते हैं गुब्बारा कब तक चलता है। सर JP मोर्गन को इतना, जो वेल्स फार्गो उनका रिजल्ट आए, उनके HDFC बैंक से ज्यादा प्रॉफिट है, फिर भी वो इतने प्रीमियम पे नहीं ट्रेड करते हैं। इंडिया इज डिफरेंट, इंडिया में ग्रोथ है, वो चोरी है, चकारी है। जो हम समझ गए बात, अभी ज्यादा क्या बोले हम भी। क्योंकि सर जो डिपॉजिट और एडवांस के जो नंबर्स आते हैं, वो जो लोन अकाउंट होते हैं उनको डेबिट करके उनके सेविंग अकाउंट में डाले जाते हैं, और वो दोनों फिगर बढ़ जाते हैं, हमें पता है। और हर ब्रांच में 10-10 करोड़, 4-4, 5-5 करोड़ वो इन्फ्लेट किए जाते हैं। अगर 7,000 ब्रांच हैं तो आप 50-60 हजार करोड़ तो ऐसे ही चले जाते हैं सर, हमें पता है, हम वही करते हैं सर। और इसके बारे में कोई नहीं बोलता है सर। एक्चुअली मेन जो सबसे ज्यादा कंसर्न ये है, इसके बारे में कोई आज के टाइम में बात नहीं करता है। भी आप विद इन 2 days 50-60 हजार का करोड़ का बिजनेस बढ़ जाता है, और उसके ना कोई ऑडिट है सर, क्योंकि कोई ऑडिटर वगैरह इनके ही होते हैं सर। ये क्या करते हैं करंट अकाउंट? हाँ जी सर, ये क्या करते हैं, समझा नहीं मैं। सर जो ऐसे होता है ना, जो टायर 2 या टायर 3 सिटीज में जो लोन के अकाउंट्स चलते हैं, मान लीजिए आपका CC लिमिट चल रहा है 50 करोड़ का, आपने 10 करोड़ ही उठा रखा है, उसमें से 40 करोड़ आपका पड़ा है। वो क्या करेंगे आपके आपसे, क्योंकि बैंक के साथ उनकी मीटिंग मैनेजर वगैरह जो भी हमारे होते हैं वो नॉन होते हैं, उनको कहते हैं भाई जी हम 31 को आपके अकाउंट से 30 करोड़ या 20 करोड़ जो भी अमाउंट पे वो एग्री हो, वो आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे या करंट अकाउंट में आपके चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बैंक का जो लोन होगा वो भी बढ़ जाएगा, और जो सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग का जो जिसको डिपॉजिट बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। पर एक्चुअल में वो आपने अवेल तो 10 करोड़ ही कर रखा है, तो 10 + 30 मतलब 30 करोड़ रुपए ऐसे बढ़ गया। और ये हर ब्रांच में मान लीजिए 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ या 10 करोड़, कोई बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं जिनका मान लीजिए आपका 100 करोड़ का लोन है, वहां तो मान लीजिए सर मैं आपको एक रफली फिगर दे रहा हूँ, अगर किसी बैंक का 7,000 ब्रांचेस है तो 3-4 हजार 5 करोड़ का एक ब्रांच का भी मानो ना, तो 50,000 करोड़ का अराउंड का फिगर होता है सर, और हर क्वार्टर में। समझ गया। पर इसको सर आज के टाइम में, क्योंकि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ इस चीज को रेज करिए, जो प्राइवेट बैंक्स को ऐसे जैसे ये होली काऊ है, इनसे मतलब ये तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज नहीं है, पर इसमें सर बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल है, मतलब सब कुछ दब जाता है इनके आगे। 1-2 पहले विशल ब्लोअर ने कोशिश की थी, उनके भी मुंह बंद करा दिए गए हैं। इंडसइंड बैंक का सर हुआ था, कितने रिपोर्ट्स आई थी, वो भी सारे बंद हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक तरीके का सर्कल चल रहा है सर। और आज के टाइम में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, गवर्नमेंट के साथ में बैठते हैं कुछ जो वेल नोन रेप्यूटेड बैंकर है ना इंडिया के, वो गवर्नमेंट के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा है। और एक चीज सर, आज के टाइम में जो प्राइवेट बैंक डिपॉजिट लेते हैं, मान लीजिए आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट ले रहे हैं, तो वहां पे सर वो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का बैंकर के साथ इतना ज्यादा आज के टाइम में चल रहा है भी, वो पे बैक करते हैं, बैंकर्स होते हैं जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, पॉलिटिशियन को देते हैं, और फिर एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स उठा लिए जाते हैं या फंड उठा लिए जाते हैं। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का 10,000 करोड़ का है साल का, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, वहां पे 5-10 करोड़ का उनको दिया जाता है सर। और आज के टाइम में इसके बारे में कोई नहीं बात करता भी, कैसे एक डिपार्टमेंट आपने कैसे सोच लिया भी महाराष्ट्र पुलिस के अकाउंट HDFC बैंक में आ गए, क्या वो ऐसे ही दे देंगे अकाउंट HDFC बैंक को? बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, ICICI बैंक को क्यों नहीं दिया उन्होंने, HDFC बैंक ने ऐसा क्या कर दिया भी उनको दे दिया? ये इस चीज के सर बात होनी चाहिए इंडिया में।
बाकी दूसरे बैंक प्राइवेट एक्सिस बैंक से क्यों ले लिए, या जो लिए वो पॉलिटिकल मुद्दा था, या दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे पंजाब पुलिस के अकाउंट एचडीएफसी में ट्रांसफर हुए, तो क्या एचडीएफसी साथ में इनकी ब्रांचेस भी नहीं थी पंजाब में इतनी, फिर भी इन्होंने दे दिए। अब ये चीज क्यों दे दिए, इसके पीछे रीजन क्या है? आज के टाइम में इसकी बात होनी चाहिए, कितना कुछ दिया गया अंडर द टेबल, कितना मनी फ्लो होता है इसके रिगार्डिंग। सर मैं क्या बोलता हूँ, ये सब बात है ना, आप मेरे को फोन करके बताओ, ये पब्लिक स्पेस में इतना बोलना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? सर मैं ये चीज आपको बताना चाहता था, जो ये जो अरे तो बताओ ना, मेरे को खुल के बताना व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ये फोरम पे मत बताओ प्लीज, इतना ज्यादा मत बोलो। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ओके सर। या युवराज, युवराज बीबी जी, Good evening, sir. Ganesh here. गुड इवनिंग Sir, this stocks like Metropolis, Lal Path Lab, Apollo Hospitals and all, uh, they just pumped up recently. I mean, still around like 40, 50, 60 P kind of thing. I'm thinking to, again go short on it. But again, I will listen to your earlier thing when you said you have to buy calls, you know. The Narayana Hrudalaya, this particular thing has a sales of what 1,000 crores or something, and the market cap is around like 16,000 crores. How do I measure it? I mean, is it this the way I should say, sales versus market cap? Somewhere I should see whether a stock is worth the market cap. Any clue or links I would want to understand much deeper in this. in some other space we'll discuss this. If you have any query on technology or IT, please. No, I don't hold any of these IT companies at this point of time. I mean, I exited some last year something, so not anymore. ठीक, Okay, thank you, sir. युवराज, सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मजे में भाई। अच्छा, थैंक यू, अच्छा लगा सर। मैंने अभी एक्चुअली हाल ही में 1-2 दिन पहले एक स्टॉक लिया है, उसका वो जानना चाह रहा था, मतलब चार्ट तो ठीक लगा था, वो है केपी एनर्जी। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? बहुत अच्छा है। क्या भाव है, 1 रुपया या 2 रुपये? नहीं, मैंने लिया है 173 में। 173? यार वेरी ऑनेस्टली आई डोंट नो, ओके, नो कमेंट्स। और लिख के देता हूँ, ये आपका पैसा नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा। ओके सर, ऐसा अननोन कंपनी में क्या जाता है यार। ओके सर, आई विल लुक इनटू इट नाउ, थैंक यू। No, you don't have to look into it. You can continue holding it. It can double, triple, whatever. I don't know anything. Okay. But if my investing style, I will only buy stocks which I know and which will be there for 100 years. Okay. ठीक है सर, थैंक यू। Yeah. थैंक्स। Anybody else? Okay, who's this? Deepak Sharma, go ahead. दीपक शर्मा बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर सर आप जैसे आप एडवाइस करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। मैं आपके स्पेसिस बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ
और सर मैंने उसमें मैं करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, बट मैंने उसमें एक्सपोजर काफ़ी कम कर दिया। अर्लियर इट हुआ, मतलब पहले मेरा 50% कैश में रहता था, तो 50% FNO में, अब 20% कर दिया मैंने FNO में। सो कैश में बढ़ा दिया मैंने। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर लास्ट 1 ईयर में मैंने देखा काफ़ी लोगों ने लॉस किया है मार्केट में, अगर लास्ट 1 ईयर में कोई प्रॉफिटेबल रहा है FNO सेक्शन में, तो मतलब वो अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा। why not? तो सर मैंने काफ़ी See, देखा कि ये लोगों जो ने काफ़ी लॉस किया है इसमें लास्ट 1 ईयर में, बट मेरा सर थोड़ा मैं ग्रीन में ही हूँ। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक अ सजेशन फ्रॉम यू। नहीं, ये जो है ना फ्यूचर का, एक्चुअली इट इज अ गेम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। ओके। ये बच्चे लोग का आवाज आ रहा है, नहीं बच्चे लोग का आवाज आ रहा है आपके वहां से। आप म्यूट हो जाइए। रिफ्लेक्सिविटी is a killer. People don't know how and why. एक सेकंड, तो मैं ड्रिल करू પડશે તો એ પૂછતો હતો કે પરમિશન આપશે, મેં તો હા પાડી દીધી છે, તો ખાલી પાયલને કહી દઉં કે 5 મિનિટનું કામ. This reflexivity will kill you. You are in profits because yes sir, your sizing is different. Your sizing is small compared to what you can do. That is why the moment you increase your size, I can certify you will make losses. यस सर, वहाँ साइकोलॉजी का इशू आ जाता है सर, मैं वो समझता हूँ। सर और सर मुझे टेक्निकल IT स्टॉक्स पे कुछ सर बोलना था। सर मुझे लगता है कि काफ़ी जो यूरोपियन बैंक और US बैंक्स है, उन पे अर्निंग का काफ़ी प्रेशर रहेगा इस क्वार्टर में। तो सर मुझे क्या लगता है कि जैसे इन्फोसिस है या फिर TCS है, इनके जो मेजर क्लाइंट्स है, दीज आर बिग बैंक्स इन यूरोप एंड US। तो अगर वहाँ पे सर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इनके स्टॉक्स भी गिरेंगे, और वही सर हमें चार्ट्स में दिख भी रहा है कि ये स्टॉक्स पहले से ही इसमें एग्जिट होना शुरू हो गया है। तो सर स्मार्ट मनी जो है पहले से ही निकल रही है, और मुझे लगता है यहाँ पे रिटेल खरीदेगा और यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। IT स्टॉक सर मुझे यहाँ से बहुत बेरिश लगते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत यहाँ से बहुत डाउनफॉल है IT स्टॉक्स में। मेजरली ये जो major player है like Infi, TCS and HCL, these are major banks, major companies where I see major fall. Okay, thank you. डॉक्टर साहब आपको इनवाइट भेजा है, ले लो। युवराज आपका हो गया भाई? यस सर, मेरा हो गया सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? डॉक्टर साहब चलिए, देयर आर नो मोर स्पीकर्स। ओके, आ गए डॉक्टर भाई, बोलो बोलो सर। डॉक्टर भाई जी सर, मैंने सर बस अभी ज्वाइन किया था, आई वाज लिसनिंग, आपको सुन ही रहा था, अशोक को। नहीं, द स्पेस इज अबाउट रिजल्ट्स। जी सर। इन्फोसिस, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? दैट्स द पॉइंट। सर मैंने अभी रिजल्ट देखे नहीं है, लेकिन हाँ US का जो रिएक्शन था IDR का वो जरूर थोड़ा सा विजिबल है, और
कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, अभी मैंने देखी नहीं सर, मैं आई विल सी द रिजल्ट्स। अरे रिजल्ट को क्या देखने का, भाव देख लो समझ में आ हाँ, जाता भाव है। के हिसाब से तो सर बियरिश है, चार्ट तो बियरिश ही है ऑलरेडी, मतलब तो और करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है, मार्केट जब भी ओपन होगा देयर विल बी प्रेशर इन होल आईटी सेक्टर। मतलब टीसीएस का देख लिया हमने, इन्फोसिस का रिफ्लेक्टेड है ही ऑलरेडी, सो ये दोनों जब स्टार्ट करेंगे फॉल करना है तो बाकी पीयर में भी प्रेशर दिख ही रहा था, और एग्रीवेट हो सकती है सेलिंग, दिस इज माय व्यू। उसकी वजह से निफ्टी में भी प्रेशर आ सकता है ओवरऑल। अरे डॉक्टर जी साहब, सर। आज दवाई नहीं ली क्या? धीरा धीरा बोलते हो। नहीं नहीं सर, मैं ऊपर हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पर। But what I made one comment which you should hear is that the backbone of the market is gone. Technology. हाँ सर, अभी तो है सर, अभी प्रेशर है, मतलब इट इज वीक। And with this kind of results, I don't think you will see any improvement in 2-3 years because of this Chat GPT and all that. हाँ सर, चैलेंज है वो, एआई भी चैलेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इन कंपनीज के लिए। ये आपको समझाने के लिए बोलता हूँ डॉक्टर जी साहब, ये टेक्नोलॉजी वाले कैसे हैं, एक कंपनी में मैं जुड़ा हुआ था, वो बोला हम ये कर रहे हैं, क्लाउड कर रहे हैं, फिर कुछ आया तो बोलते हम ये भी करते हैं, फिर अभी ये आया तो बोलते हम एआई भी कर रहे हैं, अभी चैट जीपीटी है तो बोलते हम ये भी करें। मतलब ये उल्लू बनाने का धंधा है, कौन किसको किधर। यस सर, और बाकी सर ये बिजनेस सबको समझ में भी नहीं आता है, मतलब जो टर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव होती है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, और उसका रियल मीनिंग किसी को समझ में नहीं आता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो उसको समझ पाते हैं। और ये सब एक तरीके से स्टार्टिंग ही है, मतलब जो भी नई नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, और कौन सी कंपनी आगे जाके लीड कर पाएगी ये टाइम ही बताएगा। कूदने को तो सारे लोग कूद जाते हैं, बट रियल में उसमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कौन जनरेट कर पाता है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ओवरऑल यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है, और वो तो बोल ही रहे हैं क्लियरली कि आगे अभी 1-2 साल उनको लगेंगे ओवरऑल नॉर्मल होने में, सो ये टाइम चैलेंजिंग रहने वाला है आईटी के लिए। नहीं, और दूसरा, मतलब आप नहीं थे उस टाइम, मैंने एक कमेंट पास किया, इंडिया में चोर उचक्का मक्कार बेईमानी यही चलता है शेयर बाजार, और कुछ नहीं चलता। इससे आप संभल के रह सकते हो तो रह लो, वरना भाग जाओ। द मोस्ट डेंजरस प्लेस, den of thieves is this market. और कुछ बोलना चाहोगे डॉक्टर? नहीं नहीं सर, ये अभी तो वीकनेस है, आगे जाके देखेंगे सर, अगर स्ट्रेंथ आती है तो, अभी तो नहीं है, सो अभी अवॉइड ही करना चाहिए। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि नीचे पड़े हुए हैं और बाइंग यहाँ पे करना सही रहेगा, तो वो अभी कम्प्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, होल सेक्टर को अभी अवॉइड कर सकते हैं। अगर टेक्निकली भी आप देखते हो तो टेक्निकली भी अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है स्टॉक्स में, और फंडामेंटली तो दिख ही रहा है कि वीकनेस है, तो इट्स अवॉइड कम्प्लीटली। थैंक यू सर। Okay, so we don't have any more. Okay, here goes yes. Yes. Yes, unmute and speak. Yeah, Rahul.
Good evening, sir. Good evening. Sir, मेरा question related to future, sir. Sometimes future prices go into discount, like the prices of future are less than the spot price. What does that signify? Signifies? Can you explain? In It signifies a lot of things, but the major reason is somebody is very bearish, and in cash market, people are holding the price, so he sells in the futures at a discount. Okay. Understood, sir. Thank you. This phenomena is seen in LTTS. In Polycap also, sir. Recently. Polycap, there is selling pressure in futures. That's it. Selling pressure in futures. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Yash. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. सर जैसे अभी वो चैट जीपीटी और एआई की बात हो रही थी, तो सर उसमें थोड़ा कहना चाहूँगा मैं। तो सर बेसिकली जो इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज है वो सिर्फ सपोर्ट रिलेटेड जॉब करते हैं। तो मेजॉरिटी मार्केट कैप इन्हीं का ही खत्म होने वाला है उससे, क्योंकि चैट जीपीटी सर बेसिकली सर ये सपोर्ट वर्क जो है ना वो ऐसा हो जाएगा कि जो 20 लोग काम करते हैं ना वो एक इंसान कर सकता है जिसको चैट जीपीटी यूज करना आता है। सो इंडिया का जितना भी टीसीएस और इन्फोसिस, विप्रो, इस टाइप की जो कंपनीज है ना, इसके अंदर से ले ऑफ विद इन 1 ईयर एक मैक्सिमम शुरू होने लग जाएंगे, क्योंकि जितना भी ये जो आउटसोर्सिंग वाला जॉब है ना ये यूएस कंपनी खुद ही हैंड ओवर कर लेगी अपने पास ही, क्योंकि उनको एक ही ट्रेन इंसान चाहिए रहेगा जो उसको ऑपरेट कर सके। आई मीन अभी एक यूएस की कंपनी का देख रहा था मैं, उसके अंदर उन लोगों ने जैसे डिलीवरी के लिए बॉट्स बनाए हैं। सो वो बॉट्स को क्या है कि एक ही इंसान है वो ऑपरेट कर रहा है, 2 लोग हैं, एक मॉनिटर कर रहा है और एक का काम सिर्फ ये है कि कोई बॉट अगर बीच में कहीं अटक जाए तो उसको जाके वापस से रीबूट कर दे। तो टोटल वो 2 लोग मिलके 50 बॉट को मैनेज करते हैं, जो कि अभी इंडिया के अंदर जो स्विगी जोमेटो है उसमें इतना मैन फोर्स जो लग रहा है, तो वो चीज भी उसके कारण पूरा वो मार्केट डिटोरिएट होने लग जाएगा। मतलब इसमें टाइम लगेगा, ये 2-3-4 साल की साइकिल रहेगी, क्योंकि इंडिया में भी इस टाइप के स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे। सो इसका इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट जो एआई का है वो इंडियन मार्केट पे ही पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे, बाकी किसी जगह पे नहीं पड़ेगा। यूएस आईटी सेक्टर विल ग्रो एंड इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वो प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो बस ये सर यही था सर आईटी का, इसका एआई वाला। Thank you so much. थैंक यू सर। Akansha, you want to speak something on results? आकांक्षा, आपको भेजा इनवाइट, एक्सेप्ट करो, बोलो कुछ, आईटी एक्सपर्ट। नो तो हाँ बोलिए आकांक्षा, बोलिए। So, good evening. Good evening, good evening. So, I just joined the space. I'm sorry I couldn't hear what was happening before. But yes, नहीं, yeah. only TCS and Infosys results. Yes, so TCS and Infosys, like we were discussing like months ago. I mean, not months ago, but like in March also we had discussed. In your spaces only we had discussed that because of the banking crisis, it is going to reflect. And it reflected also. The growth projections were below their own targets. Like Infosys ADR down almost 10%. So this you had already said that it's going to impact their deals, and we also like spoke. अरे छोड़ो ना, मैं क्या बोला था वो भूल जाओ ना, अभी तुम बताओ ना। Which is, so I'm just saying so that it turned out to be true. बिल्कुल
वैसा ही हुआ उनका रिजल्ट्स में, जितना कंपनी ने सोचा था उतना भी नहीं हो पाया। एंड उनके मतलब जो मैनेजमेंट से बात होता है उसके बाद, सो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि इट्स बिकॉज वो बैंकिंग क्राइसिस में हमारे बाकी क्लाइंट्स भी दे डिफर्ड द डील्स, बड़े डील्स डेफर हो गए। एंड तो अपेरेंटली बट दे आर थिंकिंग कि ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में भी ऐसा ही ग्रिम सीन रहेगा आईटी में। तो अभी विप्रो का तो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी इवन वर्स, और मिड कैप आईटी विल आल्सो बी वर्स बिकॉज उनका भी काफी एक्सपोजर है बीएफएसआई में, ये पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस वगैरह। आकांक्षा एक बात बोलूं तेरे को? यस सर। ये जितने भी इनके सेंटर्स है ना, डेवलपमेंट सेंटर्स, जैसा टीसीएस का बिल्डिंग वगैरह सब है ना, सब जगह पे हाँ सर। they will be half empty after a year or so. लिख के रखो। Yes sir, like their hiring, yeah. Yes sir, correct. Their hiring has also reduced, and for the first time in like at least 40 quarters, TCS का hiring negative हुआ था last quarter में, और इस साल उन्होंने सिर्फ 22,000 लोगों को hire किया है, which includes freshers, which includes lateral hires. This is a company जिसमें 6 लाख लोग हैं, उसमें सिर्फ 22,000 लोगों का hiring हुआ है। तो और attrition भी अभी ऐसा ज्यादा नहीं है, तो attrition is also low, but they're not replacing people. You're correct sir, it's going to like reflect in the workforce headcount also. And this valuation of TCS is there because 71% is held by Tatas. If the free float would be 100% like Infosys, I think the price would be 1,200, 1,300. Yes sir, makes sense sir, makes sense. Anyway, our Indian markets are all about manipulation. Survive. Don't lose money in speculation. Rule number 1, don't lose money. Rule number 2, don't lose money. Rule number 3, don't lose money. If you have a position, if it's against you, sell whatever, call, put, ye ho. End of the week or settlement, you should be in plus. That's it. The measurement is end of settlement and not daily. Daily you might have mark to market losses, that's okay. Those are just differences you pay, and at the end of the day you get it back. But never ever lose money in futures market. If you lose it, you have no place in this market. Do something else. Yeah. And Akanksha, any other input? No sir, I wanted to ask you sir, like companies are still trying to give positive commentary, and but at least it's evident from the result कि at least 2 quarter में तो ऐसा ही रहेगा. But what do you think beyond 2 quarters, like थोड़ा long term में, in maybe 1-2 years down the line, like you said headcount reduction वगैरह होगा. So do you think other changes will also come also in like other IT companies also, जैसे Accenture, Capgemini, Cognizant? You think they will also, so they are already facing headwinds, but Yeah. do you think something else will also happen? No, I'm only bullish on Accenture because they have consulting also with them in a big way. And last 2 years they acquired 100 companies, whereas TCS only acquired 1 company. So that's the difference. And I don't see any future in this sector. It's gone, it's done with. Because AI, ChatGPT will replace people. So what do you do? No, Yes, this TCS CEO told us, like after the earnings, he did like one interview with Business Today. In that, he only said that now it's easier to have
to get it done by an AI, because AI does not have a learning curve which which a human being has, so it's more productive. So even they are thinking of, and it will impact their business also. If there is code generating AI which can write programs, then why would somebody want to outsource? Net is going to be very tough. Beta, very tough. Yes, You sir. you won't be able to see. People call me bearish. Yes, I'm not bearish. I'm critical. I'm cynical. My hard-earned money is at stake. Why I will not? And if you are not, you are stupid. जाओ मटका खेलो. मुझे मटका नहीं खेलना है. I will check, do reading, ask Akansha, ask Dr. Saab. पूछ के करेगा. And my biggest learning curve comes from talking to people. I assimilate and gather a lot of things from a lot of people. Akansha may be very young, but still, she can be a source of information to me, or she would explain to me, or she would guide me. It's nothing that I'm 65, she is whatever in her early 20s. So what? Nothing is wrong in asking. Everything is wrong in telling. Don't tell people what to do. Ask what to do. I read somewhere today, depression is past, anxiety is future, and peace is present. So don't worry too much about past, future. Live in the present. Akansha, anything else you want to say? No, sir. No, everything has been covered, sir. Like even you also covered the part that Indian IT is not investing in, going beyond IT services, getting into consulting, cloud, like enough, like other companies are doing. You also gave example of TCS and Accenture, which is fair enough, sir. That's all, sir. No. One point which I never opened my mind because it was back of my mind, but it never came out. See, Indian IT has not spent any money on R&D. No money on R&D. Now, if you don't spend money on R&D, you are doomed. Now it will show the world why they did not spend money on R&D. Anyway, thanks a lot, Akansha. Yeah, Avinash or whatever. Hello. Abhishek, we have some connection issue. Okay, TS. Yeah, TS. Bolo TS. Good evening, Sharad sir. Hope you are doing good. Yes. So I have heard you regarding this IT services results and all. I agree with you. One thing, am I audible? Yes. Yeah. So one thing about Indian IT having replaced by AI and other chat GPT kind of this artificial intelligence things. One thing is that the major contributor of our Indian economy in terms of exports, basically, what we get from dollars, because our most of our buying is
in dollars, crude, gold, and other things. The only thing we get as an dollars import is due to IT, because remittances and the money what we get from dollars. So if after 2-3 years, if this thesis holds good, like 50% of the spaces goes off, then what what will happen about our fiscal deficit? It's not about only losing jobs in IT. Everyone knows Indian IT employees I'll put it in this way: TCS, Infosys, I'm not blaming any company. They are a manpower provider agencies for big tech companies in US and UK, including banks of developed countries. That's all. They are obedient English speaking guys, who does job whatever they say. And the sad part is, as you rightly said, I think Akanksha was also pointing out, no spent on R&D. Just TCS and Infosys, what we have been doing last 15-20 years, obedient copy paste work or coding work. What my boss tells in the US, I'm doing it. I have not spent anything on my upgrading of my employees, R&D. And the major controversial here is, not controversial, maybe pathetic thing going to happen is, even the dollar what we get, because of these services are also going to screwed up. So this is very bad for Indian economy in that way. So is that right, sir, or anything you want to add upon this? Today morning, I can read the headlines only, because whatever is written, I cannot read because of cataract issue. Exports growth is down. There is slowdown, disturbing slowdown. Akansha, what was the headline? I forget. I don't know the exact thing, but I think the numbers are down relatively from the past few years. So, DS, अभी देखो यार, 2 दिन छुट्टी है. Yes. You and I know things are bad, okay? Now, how bad is the question? Exactly. If it is so much bad, at least it should be people should be prepared for some other occupancy or doing something like China. They know that this is going to happen. They have a lot of manufacturing facilities developed, so that manufacturing is a sector which provides job, and it's a positive GDP. But the service sector in India, like ChatGPT or any other tool, even Google is also building now. They have a bird called AI tool. They can replace 1 in a 20, because our is mostly of a manpower kind of a thing. That was my elaborated question. Question or answer? Because you know the answer. So okay. I would only say, for investors and traders, don't buy Infosys because it is available 10-20% cheaper. Stay away from it. Thank you. Yes, please. Pradeep. Hello, sir. How are you? Fine. Sir, I have a background of 20 years into IT industry. Okay. And I'm right now working on the RPA side, robotic process automation, with a US-based organization. Okay. So, quick background that I can say the difference is offshore, the onshore. When I used to visit onshore, okay, on site, they always have a question, okay, that they don't want to outsource anything which is very very good, okay. They only want to outsource any donkey work to offshore teams, okay, but they always preferred a good work to be done at on site.
Okay, so this is a slight bit that's the reason why the offshore opportunities in the very niche segment is very less. Okay, so I thought I'll share that on this platform to you. Other than that, that's it. But as of now, uh, we also seeing a lot of headwinds, a lot of less client related inquiries on the new releases that we done. So not a lot of a lot of what you call clients showing interest also with the new things that are getting released. Okay, so we are basically working on the product development side. Okay, so we keep releasing new updates every now and then. So there's not a lot of last few months have been really tough. So just a quick background about how things are going on. Okay, but yeah, like we are keep working. Okay, we are constantly updating things. Yeah, ChatGPT is it's we have started using ChatGPT in one of our products. Okay, to give you a quick glimpse. Okay, we have a very old product which is not an AI product. Okay, it's very manual driven stuff. Okay, well, code driven thing. Okay, but now the difference is so different. It's amazing. The output is so good. Okay, we have replaced the old system with the new system. Okay, and we are already gone live with that using ChatGPT. Okay, so this is the difference that is coming up actually. And one more thing, there is manual job. We have a cloud dependency, a lot of cloud dependency. Okay, we do a lot of cloud work. So a cloud, when you do anything, we need a good size team, very big team. Okay, if you have to manage products, we need a good structure, big team. There is somebody in US using ChatGPT. Okay, has come up with solution. Okay, you don't need a team. Somebody from the business can write one line and do everything, release the whole thing. Okay, the people who 20 people working on that thing. Okay, could take weeks to do that, and ChatGPT could do that in like 2 hours or 3 hours or 1 hour. So that's a big difference. This whole AI thing is bringing in the whole IT industry. Okay, and there's one last thing I'll quickly close. There was a guy in US. Okay, I keep following up with a lot of technology people. This guy wrote a code. Okay, which would take 2 weeks to complete, and he did that in 3 hours, and he went to production with that code. Okay, so that's it. I just want to give slight bit idea about how different AI is going to bring, but it's coming up fast. No, but our assessment as layman of technology, is it right or wrong? Yes, it is going to create problems. Yes, it will, sir. It will break the. It's breaking things actually. As of now, uh, develop. Look, there is a value that is added by AI to developers. Okay, the developers are getting more. I only 2 days or 3 days back I bought a tool which was released by Microsoft. Okay, and I liked it. Okay, so when I was using that tool, okay, in a code, okay, that tool itself generated a code which which I could not even think how it generated that. So imagine that thing, innovation that is coming up with that AI, okay, is doing what human will not be able to do it that fast. So it will replace, okay. And I'll tell you one more thing. My on-site counterpart, okay, he said his productivity with AI, because of AI, the productivity has gone up like multifold. Okay, he says that he has gone to his productivity using AI. He is kind of very good. Okay, so that's I'm saying it's increased. It is, of course, it's gonna reduce manpower, and AI is gonna take over a lot of things. Okay, it's just time. Okay, how much time it will take? The new version will come, and what it will do, God knows. That's. Thank you. Yes, Ashish. Mr. Masant.
Sir, very good evening, sir. Good evening. Okay. So technology was a topic of conversation. The results is a topic of conversation, and the impact of technology on many of these what do you call the future results in the IT sector. So I thought if I could take 2 minutes to just put together my view, basically, because I have been in the technology industry for over 33 years plus now. So first and foremost, what I see is in the technology services space, the biggest what you call drawback which the Indian companies today have, and you rightly said that one, they do not have a strong consulting background, and one of the listed companies in this space, listed companies in the Indian market has a good consulting background, okay, but not comparable to what Accenture is basically. So I think you rightly said that they do not have a strong consulting background, and therefore most of the Indian IT companies who are not doing the research and R&D basically are glorified recruitment agencies for technology professionals basically, and they are able to create a system to do the stuff basically. Now this is definitely going to have going to be definitely some impact which is starting to happen in the next 6 to 12 months is what my estimate is. That as these services become more and more automated, basically, there will be not only just ChatGPT, but the offshoot of the products which people are creating, the intellectual property, which small and mid-sized companies globally, and I'm saying mainly, and these are companies which is mainly happening outside of India, basically, they are creating lots of tools and so on and so forth on top of ChatGPT, which are actually automating many tasks, basically. So there will be a lot of impact which will happen because with the services of which are being delivered will definitely get impacted, and less and less there will be gradual decrease of flow of offshore work which is going to happen, and therefore that cost arbitrage is going to start disappear. The advantage which is what the technology companies today are currently working on. Okay. The third aspect is that the intellectual property development of your own within the Indian companies. For example, TCS has built a few products around banking and insurance side. I think a very, very strong intellectual property. Similarly, Infosys has built a very strong banking solution, which is a very, very strong intellectual property. But like that, not every company from India in the technology services space is able to build the intellectual property and scale it at a global scale, basically. So this is where I think we will definitely face a hit, and this hit will come in because the chat GPT based models are also going to come in, and they're going to act as a disruptor, basically. So I think this next 2 years time is going to be a gradual decline is what I see, and this decline could even be to a tune of like maybe 10 to 15% of the kind of the offshoring work which is being done outside of the US, basically, and outside of the Europe. And this offshoring typically goes into not just India, but also goes to the Eastern European countries, the ASEAN countries, Malaysia, Philippines, and India, and so on and so forth. So, and therefore, there will be definitely a gradual decline which is going to happen. So, from a profitability point of view, the profitability impact is definitely going to be at least 10% every year because of the reduction in the offshoring itself, basically, or will start to happen, I think, within a year's time, basically. May not be much earlier, but definitely within a year's time. I'm not counting into effect the global disruptions which may typically come. That's all. 2 cents to myself. Ashish, you are very guarded. Anyway, thanks a lot. You're happy. Thank you. You're happy. बोलिए ना सर. हरमीत खुराना. Harmeet Khurana. Hello. Yeah. Good evening, Sharad Bhai.
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जो मैं डिस्कशन सारी सुन रहा हूँ रिगार्डिंग द collapse of the potential collapse, I would use the word, of the IT sector, body shopping and all. It appears कि अगर इस टाइप की चीज सिनारियो हो जाता है, because this is our biggest employer of middle and upper middle class sector, and our entire consumption story, right from housing, FMCG, everything, this sector has been the biggest contributor of employment in the past 2 decades. Manufacturing has not produced any global scale results. So overall, it might impact a lot of sectors going down the line. हरमित भाई बोलिए। ये हाँ जी तो you want me to agree or disagree with it? नहीं, I मेरे को ये बैठे बैठे ये दिमाग में आया, तो I just wanted to see what your views are on this. ये तो अभी आया, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि आएगा, तकलीफें आएगी। हाँ सी हरमित भाई, हाँ जी, एक नेचर का लॉ है। हाँ जी, आप स्टॉक मार्केट को भूल जाइए। हाँ, Until you grow, thereafter there is a deterioration. Right. It is applicable in everything. बिल्कुल You ठीक है, think it over. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Either you grow, there's nothing as plateau. Either you go up or you go down. Or a bit of a cynical that I'm saying we have grown enough. There is no more scope to grow because of blah 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 reasons. Right. So I think, see, my whole thesis on Nifty being 12,000. I'm sorry, but a lot of people don't like it. It will be worse than that. Some of my friends call me the man who saw tomorrow, because of late I am not doing this, but my job or my hobby was to predict the future based on various parameters which I cannot explain to you. नहीं शरद भाई, आप at least what I appreciate is at least you're sticking your neck out and you're saying you might be right or wrong, that is separate, but you are explaining based on very clear factors, and you're sticking your neck out and you're saying that this is gonna happen. No, but Harmit bhai, हाँ जी, ठीक है, Nifty is 18,000. I am saying to 12,000. doesn't matter. No. हाँ Just जी, no. But just tell me how your portfolio is. शरद भाई, मैं आपका ज्ञान लेके मैं तो बड़ी देर से अपना पोर्टफोलियो जो है ना 80% कैश में। नहीं, फिर भी जो 20% बचा है, 20% जो बचा है वो सारा ओएनजीसी, ये डिविडेंड यील्ड वगैरह वाला रखा हुआ है, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। No, so the point I was making, if you have a portfolio, हाँ जी, your NAV is like 10,000 यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर वो मैंने पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं किया होता लास्ट ईयर, तो आई वुड हैव बीन व्हाट यू एट द लेवल व्हाट यू आर सेइंग। बहुत मेजर वे से एग्जिट किया इन आईटी सेक्टर एंड अदर सेक्टर, कंप्लीट क्लीन आउट करके 80% कैश पोजीशन। वही आपकी वाली बात कि कहीं से भी कॉल बेचो, पुट करो, पैसा लेके आना है घर, और कंसिस्टेंटली पैसा बन जाता है। बट पोर्टफोलियो का जो मार पड़ता ना, अगर माल पड़ा होता तो सब बराबर हो जाता। और लोग समझते नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है। आप तो बारी बारी लोगों को वार्न कर रहे हो ना, ये 70p 80p के स्टॉक्स, मैं शॉक होता हूँ देख के, लोग ये क्या सोच के ये मान लेते हैं।
70p 80p 60p, कैसे ये पैसे बनाएंगे? और कोई उनके पास कोई इनोवेशन नहीं है, कोई डिसरप्शन नहीं है। इनफैक्ट उनके सेक्टर आर इजीली डिसरप्टेबल। नहीं, वो सब है ना चूतिया बनाने का मशीन है। हाँ जी। और कुछ नहीं है। हाँ। और भाई साहब, मैं 40 साल 45 साल से हूँ बाजार में। हाँ जी। हर 5 साल में एक नया क्रॉप आता है जो उल्लू बना के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये डिक्सन वाला है, 2 बार उठ चुका है। हाँ 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 हाँ। फिर वापस आया डिक्सन हाँ, के। ये भी उठेगा, फिर दोबारा आएगा। ये चलता है। ये वही है, वेस्टर्न वगैरह ग्रुप वाले लोग हैं ना। हाँ। ये जो टीवी वाले लोग। हाँ हाँ। तो ये सब बात है भाई, जिसको बनना है बनो अपने। अच्छा, कमोडिटी के स्टॉक्स हैं, कोई इनके प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है, कोई डिसरप्शन नहीं है, देन व्हाई आर वी टॉकिंग? कोई लोगों को देखते नहीं है क्या ये 60 70 पी का डेफिनेशन क्या होती है? एक जन ने बोला, हाँ जी, कि फार्मा लो। हाँ। तो मैं बोला पागल है क्या? हाँ। R&D पे खर्चा बताओ। परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो R&D में? और R&D का प्रॉफिट पे नहीं होता है, ऑन सेल्स होता है। चलो ओके, सेल्स पे ठीक है। तो कुछ नहीं है। हाँ। तो मैं बोला ये सब तिकड़मबाजी है। हाँ। और मुझे लेना है। हाँ। मैं US में लूंगा, फाइजर या मर्क। बिल्कुल ठीक है। तो बोला नहीं ये वो। फिर वो बोला कि कोई ट्विटर हैंडल है अनसीन वैल्यू करके। क्या? कौन सी वैल्यू करके? अनसीन वैल्यू। ओके ओके ओके। बोलते हैं बहुत बुलिश है, समझाते हैं। मैं बोला उसका धंधा ही लोगों को चूतिया बनाने का है क्या? हाँ, वो 14,000 का जो करोड़ का SIP की फिगर है ना, वही लोगों को बेच के बस उन्होंने 14 को 15 करना है, और वही 70 80 के PE को स्टॉक्स को चिपकाना है। थैंक यू हरमित भाई। थैंक यू शरद भाई। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपसे आती है। क्या करे सर, एक्सपीरियंस है, टाइम पास भी है मेरे लिए। नहीं, अच्छा है। क्या होता है कि हम लोग जो मेरा भी कमोडिटी का बहुत पुराना 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, बट जो आइडियाज फॉर्म होते हैं माइंड में, वो आपके साथ बैठ के जो आपकी जो डिस्कशन सुन के वैलिडेट होते हैं, तो उससे लगता है कि ठीक है, अपनी भी सोच में थोड़ा पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस आता है कि यस, थिंकिंग इज ऑन द राइट पाथ। और किधर से हो सर? शरद भाई, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। कभी भी कपिल लड़ाना है फोन मारो। ठीक है। नंबर है मेरा। मैं बात करूंगा तो आपको भी लगेगा कि ठीक है, कमोडिटी का बहुत डीप एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स वगैरह सब कुछ किया हुआ है। अरे भाई, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। मेरे को साहब आपसे ज्ञान लेने का 5-10 मिनट करूंगा आपको फोन, आपका माथा करूंगा। नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ जी। वो थोड़ा सा मजाक है। हाँ जी। ये 45 साल एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। हाँ। एक्सपीरियंस तो 1-2 साल का ही होगा। लेकिन 45 साल ये बाजार में मैंने गुजारे हैं। हाँ। थ्रू थिक एंड थिन व्हाटएवर, मैं डटा रहा। करेक्ट। बहुत बार पैसा लग गया, बहुत बार आ गया, अबजों रुपए की हार जीत हुई, अबजों रुपए है चले गए, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ में। बिल्कुल। लेकिन what is the difference between you and what is the difference between I and new traders? हाँ जी। Suppose I have assets of 100 rupees. I will under no circumstances deploy more than 10% as margin. Right. And with the corresponding calls and puts. Okay. बिल्कुल ठीक है। So
और द फक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाजार 3,000 बढ़ जाता है या घट जाता है, मेरा पेट का पानी नहीं हिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Whereas you are working on a paper thin capital, लाख 2 लाख 5 लाख नहीं होता है ऐसा ट्रेडिंग। बिल्कुल You are ठीक कह रहे हैं। always anxious. You are always ready to kill yourself. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मत करो यार, unless and until you are well capitalized. This is not the place to be for you. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो 2 लाख लेके आते हैं, ये करूँ, अरे नहीं होते यहाँ पे। वो 1-2 लाख से फिर करते ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो क्या है कि 2 दिन में कैपिटल साफ कर देते हैं। नहीं वो ठीक है। यहाँ पे मेरे जैसा आदमी को 50,000 रुपया दो, मैं उसको 100 करोड़ बनाने का क्षमता रखता हूँ। वेरी गुड। बिकॉज आई नो द वे। हाँ, क्या खेलना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कब खेलना चाहिए। राइट। You cannot play every day, every month and every week. No. करेक्ट करेक्ट। यू हैव टू वेट लाइक अ वल्चर फॉर द अपॉर्चुनिटी कि जिस वक्त अपॉर्चुनिटी आए यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अरमित भाई, एक कहावत मैंने कॉइन की है। हाँ। वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड। हाँ। गीत की तरह बैठे रहो। हाँ। मौके का इंतजार। करेक्ट। शिकारी शिकार करने जाता है, चुपचाप बैठे रहता है महीनों तक। बिल्कुल बिल्कुल। जब मोमेंट आता है वो शिकार कर लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। So actually there is lot of thought, lot of experience, lot of knowledge that has gone into forming what I am. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो फील होता है जो डिस्कशन होती है ना, द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन एंड द वार्निंग सिग्नल्स व्हिच यू गिव, उसमें पता लगता है जी। And somehow in me I have a sense, a sixth sense. If something untoward is going to happen, immediately all my blinkers are up. I act like a mad person in the house and all not. Internal receptors go on. Yeah. एक दिन क्या हुआ पता नहीं वो कौन से साल में। हाँ जी। तो मेरे घर में एक ब्रोकर और एक कपल आया और देखने लगे घर को। तो मेरी वाइफ बोली ये लोग कौन है? मैं बोला घर देखने को है। बोलता है व्हाट? क्यों? मैं बोला अभी गिरने वाला है भाव। बोला पागल है मतलब यू आर रेडी टू नॉट इवन फेस कैपिटल इरोजन अपने घर के वैल्यू के ऊपर। या और दूसरा एक है मेरा जो भी पूंजी है उसके ऊपर मैं शेषनाग की तरह बैठा रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शरद भाई for keeping us alert and awake in tumultuous times. Yeah. I will message you on your WhatsApp. Yeah. Yeah, Amit bhai बोलिए। Good evening everyone. किधर था इतना दिन से? यही तो सर अक्टूबर के बाद, शायद अक्टूबर नवंबर में आया था और उसके बाद और काम में बिजी रहा। तो आई एम रियली हैप्पी टू कम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 5वां महीना चालू है। एंड वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम यू एंड आकांक्षा रिगार्डिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द आईटी। तो अब तो हम खुद आईटी में हैं, बहुत परेशान है, क्या होगा पता नहीं।
बट 20 साल भी हो गए तो मुझे लगता है कि ये तो ट्रेंड है यहाँ का, ऊपर नीचे होता ही रहता है। अभी पिछले साल जब अक्टूबर में मैं आया था स्पेस में, उस समय हमारा जब हायरिंग हो रही थी तो हायरिंग वाले परेशान थे, एंड देयर वर पीपल हु वुड से कि भाई मेरा 6 से 8 लाख का पैकेज है, 14 से 16 लाख दोगे तो हम आएंगे। ऑलमोस्ट डबल मांग रहे थे लोग। एंड नाउ द सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स। विद इन व्हाट 4-5 months we have 5% of the people sitting on bench. I don't want to name a company क्योंकि वो ठीक नहीं रहता। नहीं बोलना भी मत। हाँ, बट क्या चीज बदली है आप देखो, कहाँ मारा मारी थी हायरिंग की 6 महीने पहले, और 6 महीने बाद अब बड़ी बेंच काम क्या कर रहे हैं। आई थिंक विप्रो एंड ऑल दोस गाइज हैव आल्सो postpone their fresher hiring and all those things. But sir, what I feel is, no, we are not going to go down. We are just like a wave. No, एक wave का phase था जब हम ऊपर थे, tidal wave की तरह, high tide था भी low tide है. But this chat GPT thing is a significant disruptor. जैसे इंटरनेट आया था 90s में .com के साथ, and things dramatically changed in IT. They are again set for a change with this chat GPT kind of thing. I'm not saying chat GPT क्योंकि उसके 3-4 कॉम्पिटिटर अगले 2 साल में खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके का उसको रिसेप्शन है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड $10 billion अप्रूव कर देंगे, बिकॉज what they are seeing in terms of general public and community response. There are folks. I can stop you a moment if you Sure, don't sir. mind. You talked about internet, right? Internet coming in late 90s, early whatever. But that brought growth, new tools, new products, and there was a whole ecosystem around internet. But with this chat GPT, the whole ecosystem will be restricted and scaled down in terms of hiring. I have a view there. Yeah, please. The view is that when internet came, it created its own space by blocking out certain services, certain activities that used to happen before internet. Courier वाले email से करीब करीब खत्म ही हो गए. I mean, now it's just like very critical documents that are to be given. In India, it used to continue for a while because government did not recognize the digital. But now look at some basic things, like when internet came, you have e-filing, then you have e-signature and e-verification. So you don't have to go to post office, right? So the pile that accumulated at post office went down is an example of, it's like एक समंदर में पानी उथल पुथल हो रहा है, तो कभी ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो कहीं और से आ रहा है ना. It's a zero sum game at the end. So my view is chat GPT is a big disruptor. Those who are made in the internet age, Wipro, Infosys, TCS, Cognizant and all those companies, they will be adversely affected. Some will be positively affected I don't know who those some companies will be. पर जो उनका लॉस होगा वो किसी का बेनिफिट होगा. The loss might be like you're losing 10 positions to get one AI engineer, right? So you can say कि भाई 4 लोगों की नौकरी गई, 1 की बनी, so net हम 3 के लॉस में हैं. वो हो सकता है. Low end jobs and those jobs which are not from the community which is motivated. See, India की एक reality क्या है कि 10th 12th के बाद जिसको देखो वो IT में आता है, क्योंकि यहीं जल्दी से नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, फटाफट शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है. So all this package has led to mushrooming of IT colleges. That will be adversely affected. वो ट्रेंड बदलेगा. But overall, I see there are a lot of things that are also happening wherein people are trying to pitch in products and services which are not directly related in today's world to IT, but in future they can grow into their own industries. Very difficult to predict actually. Whoever gets it right
and if he has the courage to go for private equity, खूब पैसा बनाएंगे। तो अपना तो आउटलुक ये है कि चाहे कुछ हो, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हमको देखना है कि क्या होने वाला है एंड नॉट बी इमोशनल अबाउट इट, राइट। और नीचे जाने वाला तो जाने वाला, पर फिर उसी हिसाब से आप अपना पोजीशन बनाओ। सो आई डोंट सी दैट, I see that these traditional companies that came into mid 90s and up until now, ना उनको थोड़ा सा शेक डाउन होगा, उनका घटेगा। और जो बड़ी कंपनीज फ्यूचर की होंगी, से 2030s और 35s की जो बड़ी कंपनीज हो, उनका जन्म अब होगा। ये मेरा एक आइडिया है कि ये हो सकता है। एंड चैट जीपीटी इज अ स्टार्टिंग, ओके। आप इसकी इम्प्लीकेशंस हेल्थ केयर में देखिए, ठीक है। I'll give you one example. See, in US, the insurance companies run healthcare training programs, training ही बोलते हैं उनको, so that they can promote healthy lifestyle and therefore benefit by reducing the number of health claims that will come, right? बहुत सारी कंपनीज हैं, I don't want to name some, but almost all the big insurance companies run these programs to substantially reduce the health risk. That is a space where ChatGPT is like going to be a king. So the services that will come out would probably be like next generation of Apple Watch, which is consuming the data and doing preventive health care without involving humans in between. That will drastically change. But कोई तो चाहिए उन systems को बनाने के लिए, उनके maintenance के लिए, उनके deployment के लिए, right? So a new avenue is going to get created, and all the kings and queens of the late 90s, early 2000, which includes our companies, which includes like Google, they are set for a major challenge going forward. Google का dominance तो completely, I mean, it's outright Google has been challenged. You put some query into Google कि हमको ये चाहिए, and I have done it like 10 times with Chat GPT and found कि first you go to chat and there you type the question. If you are not satisfied, then you go to Google and आपको सीधा जवाब देता है वो। 5 आर्टिकल नहीं पढ़ने होते, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, न्यूज़ गैदरिंग एंड न्यूज़ फीड्स एंड जो हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री है, एंड आकांक्षा इज अराउंड हियर, सो शी विल आल्सो नो एंड सपोर्ट अस वेरी मच, उसको कितना जोर से ये इम्पैक्ट करेगा, मोर देन द आईटी गाइज। क्योंकि देखो, हम तो कुली हैं, हमें क्या मतलब आप किस चीज़ का सामान उठवा रहे हो, राइट? विच मेनी ऑफ द अदर गाइज फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड विल सपोर्ट। इंडियन आईटी इज लाइक कुलीज। आप बोरे में भर के क्या लेके जा रहे हो हमें मतलब नहीं, हम तो 30 रुपये लेंगे यहाँ से वहाँ ले जाने का। अब उसमें चैट जीपीटी में आप कुछ बनवा रहे हो तो हम वो बना देंगे, आपको वेबसाइट बनवानी है हम वो बना देंगे, आपको बैक एंड सिस्टम्स बनवाने हैं फॉर एंटरप्राइज ERP, हम वो भी बना रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी डिसरप्शन, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी अ ड्रॉप इन रेवेन्यू। रेवेन्यू कमोवेश वही रहेगा। The hit will be coming in healthcare. A bigger hit will be coming in news and media, and similar areas where language skill is essential. क्योंकि चैट AI जो कर रहा है ना, वो लैंग्वेज सिंथेसिस में काम कर रहा है। उसको फिर भी खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको फिर भी ट्रेन करना पड़ता है। तो we will get jobs. Even Monday onwards, we are going to do demos to many clients with ChatGPT as a component, ki how it is going to completely change their way of dealing with their end customers. और intention यही है कि अगर उनको पसंद आएगा तो हम कोई एक आधा मिलियन का ऑर्डर भी ले लेंगे। तो हमारा तो वही है भैया, जितना आपके पास सामान होगा उतने कुली लगेंगे, और मालदार पार्टी है तो बाकी से 30 रुपये लेते हैं, $30 पर आवर लेते हैं, आप सब $35 पर आवर ले लेंगे। That's my view. Okay. No, but
our discussion through a point that there will be disruption. Absolutely. That's the, Is that's the set. point. Big one. Yeah, छोटा मोटा वाला yeah, बस Akansha. 2-3 साल में क्लाउड के साथ हुआ ना, वो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा वाला आ रहा है. Yeah, So like sir mentioned about like this is a bit different. Even it's going to be hard for news and media companies also, because I can see it, they're already very threatened, because like he was saying, now you have all these media houses which are like, you can't open the news link, आपको subscription pay करना पड़ेगा. But you have ChatGPT that will bypass that paywall, and then उसका information निकाल के आपको summary में दे देगा. Nobody will visit your website anyways, तो फिर आपको revenues भी नहीं आएंगे. So this industry will also be impacted. So what is your take on news stocks, sir? Z Business का हो गया, CNBC, India Today, because like even they are going to be impacted, because a lot of their revenues come from digital only. अभी TV वगैरह print में तो कितना ही ad आता है. शरद सर, हाँ बोलिए सर आप ही बताइए अब क्या होगा. Sun TV, then we have what? NDTV is also in the market. नहीं, Akansha did not ask. She made a statement. No, sir, I asked you also. The answer is in your question only. The answer is in your question. Yes, sir. I mean, I get it. There, it is very evident also that the management is also very. You can say they're wary of this. Ki, acha, this may happen. Our revenues may slow down suddenly. So it is going to. So Amit sir raised like a very fair point that even news media will be impacted. Other industries also. So like lawyers का काम, if you teach this language model, if you train it upon the law, तो lawyer का ही जरूरत नहीं पड़ेगा. आप उसको अपना problem बोलो, वो आपको solution बता के दे देगा. Management consultants का जरूरत नहीं पड़ेगा. उसको आप problem बोलो, prompt में डालो, निकाल के दे देगा. What will be left? So Akansha, one big point. You see, the coolies are still safe. हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है. Yes, but the thing is, they also released one paper. OpenAI released one paper कि अब आगे के next like जब तक हमारा ये GPT का हम train करते रहेंगे, in that day and age the only professions which will be useful, जो जिनको हम replace नहीं कर पाएंगे, they'll be like stonemasons, carpenters और porters. वो सब उन्होंने अपने एक research paper में लिख के, अभी it came out on 27th March only. Akansha, ये ChatGPT में I can change my wife. Sir, you can like ask it to like you आपका जैसे personality बताओगे वैसा personality का बन के जवाब देगी आपको, like that can happen. चेंज तो वो सर फिजिकली तो रोबोट लाना पड़ेगा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देंगे तो जिससे वो जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देगी. सर हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा. It is a very good point actually. I was listening to a आप बोलिए. Sorry, I was on mute. I am sorry. नहीं बोलिए. Is it my turn? Sorry. Yeah, turn. So I just a moment. Srinivasan, for 5 minutes you excuse me, you handle it. Yes, sir. Yes, sir. Amit ji, आप please unmute करके please carry No, on. so I was saying is that if you look at this whole wife question that Sharad sir is raising, it's not a joke actually. The reason why it is not a joke, that if you look at
creating AI-based interactive things like Alexa, but backed by a powerful AI system which has got some insights that Google uses already in delivering ads to you. तो वो क्या कर रहा है? आपका मूड भी गेज कर रहा है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी गेज कर रहा है. You can create a virtual person who would be the best yes man you can ever imagine, right? So a real wife may agree with you, disagree with you, fight with you. This will never fight with you. Your mood changes, and if you put a health band, it can sense what is happening in your body uh, in terms of fatigue, in terms of hormone changes. उस सब के साथ खेला जा सकता है. To create such virtual assistants that are maybe like installed on your Apple iWatch or iPhone, and Apple will never do it. So, but I'm just giving an example. उनसे नहीं होने वाला, कोई और करेगा. And then what happens is your emotional attachment to this non-existent person could be dangerous to the real relationships that you have in your life, right? क्योंकि कोई पत्नी इतना यस मैनिश नहीं हो सकती जितना AI हो सकती है. So I was hearing this. There is an all-in podcast, and they talk about it a lot. All those guys are venture capitalists, so they know which way the wind is blowing. So I found it very interesting. कि अगर इस तरीके का, and that's where the avenues come in. It's just a disruption, which means a new thing will start, new markets will come in, new products will come in. You look at how GPS in your phone has created an entire industry in terms of Ola, Uber, and this whole delivery industry. Just because your phone has GPS, and Google came up with a product called Google Earth maybe in 2004-05. और उसने कहाँ जाके हिट किया? Brick and mortar shops को hit किया उसने. Because most orders are now being delivered by the likes of Amazon, Big Basket, and all those guys, and that cannot happen unless you have a GPS system and a Google map to allow those things to function efficiently. I seriously don't know where AI is going to hit. We just need to make sure we are on the right side of the trade. I don't know which side is the right side also. One last thing before I wrap up, I think, Akanksha, one of the good things that will happen, is in news and media, objectivity will increase, and you will have more focused news being delivered, like advertisements, which Google does today. That will become how editorials will happen. So, rather than, one guy reading out the news, you can have like an app which gives you a blend of news starting from immediately local. Think about this. If I have a accident in 1 kilometer of my area, that is the most important news for me. ठीक है, उधर किसी ने किसी गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, that will become second. But anything happening within 1 kilometer of my area is going to have a precedent. How do you know that what your first headline will be, second headline will be, third headline will be? Today we assume कि we can't do it. एक पेपर में एक editorial policy पे होता है. Going forward with AI, the syndication of news will be such that you will have circles of influence and areas of interest. Based on that, if it's a local news, it gets precedence over national news. And if it's a national news in a certain industry or sector, it gets precedence over other industries and sector based on choice, based on where I am, based on time of day. सुबेरे अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ और रास्ते में ट्रैफिक जाम है, वो ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. So, but a very rudimentary form of this has already been implemented by Google News, no? So, your feed is the kind of things you follow. It's based on your search result. But yeah, it's very rudimentary. They of course, they build upon. Very good point. But you understand, Google used to do search. What it does not give you the answer. It tells you where the answer is. ChatGPT does not tell you where the answer is coming from. It might be coming from 5 sources. It gives you the answer. आप उसको पूछोगे कि भाई, what is the method of preparing, say, कोई एक डिश का नाम ले लिया,
ठीक है, हलवा बनाना है मुझे, और हाउ टू कुक हलवा, वो रेसिपी देगा, वो आपको किसी वेबसाइट पे नहीं भेजेगा जहाँ संजीव कपूर आपको हलवा बना के दिखा रहा है. So this differentiation means what? That with ChatGPT, news agencies will now be more focused. The way I will name a company, because there is no better way to do it. The way ANI function, it collects news. The way NDTV function is, it gives an opinionated news based on Right, curate. based on the news collected by ANI, right? So ANI will stay probably, but decimation of news will be completely taken over by AI. So those organizations or news stocks that have a good and strong presence in collecting news will continue. But probably those organizations which are only opinion shows, कुछ तो इस देश में ऐसे लाउड माउथ ओपिनियन शोज हैं कि भैया घर में चला दो तो बच्चे डर जाते हैं, तो उनका भगवान जाने क्या होगा. That's all, sir. That's. Thank you, Amit Thank ji. you. If actually, sorry, I was away for an hour. If I may offer my opinion, Akanksha. Yes, sir. I wanted to ask you only, how do you think would this change branding? How do you think it would change like communications, PR, marketing? So two things. So I got asked I'm a marketing consultant. I'm an amateur trader, but I'm a professional marketing consultant. So I got asked my professional opinion as a marketer and more business point of view. So here's what we have been telling a few of our clients, and everyone's collecting opinions. And since this is our free opinion to our clients, I have the right to share it in a public medium. Some of our work is bought by clients, so I can't share that. So number one, we'll come back, and this is a bit of a medium long term. So it's not about 1 year, 2 year thinking. Number one, industry model. So coming back to, I think, with the results and IT and so on, IT's industry model has altered. तो अमित जी ने टेक कूलीज बोला. आई मीन इट्स अफेक्शनेट वर्ड यूज्ड बाय इनसाइडर्स. आई एम एन आउटसाइडर, सो आई होप नोबडी टेक्स इट द रॉन्ग वे. सो क्या हुआ है, इंडिया हैज गॉन फ्रॉम 1 बिलियन ITES एक्सपोर्ट्स outside Infosys, Cognizant and ये सब, like the usual names, TCS, etc., to almost, I think, 13 billion this year, financial year. And we're likely to see 20-25 billion very soon, in another year and a half or two. These are global capability centers or global captive centers. तो क्या हुआ है, जो 5, 10, 15, 20 साल पहले इंडिया में शुरू हुए थे, they became senior in Infosys, in Wipro, in GE, like the BPO industry, because they know how to run large teams and almost like a factory. These guys have moved abroad. They've been hired by large companies like Bankam, like the airline companies, like the who's who of Pepsi. I mean, the who's who GSK of the Fortune 500. ये लोग डायरेक्टली इंडिया में GCC सेंटर बना रहे हैं, एंड टू पुट इट इन अ जोकिंग वे, वो कह रहे कूली ही तो हायर करने, हम खुद कर लेंगे, तुम मिडिल मैन को हम क्यों हफ्ता दे. So this industry model shift has happened and it's going to accelerate. So number one, Infosys, TCS, if it, thinking about stock specific, we have to think about the industry model they belong in. While individually these are well-run companies, great management, and clean books, जो कि कम मिलता है हमारे stock market में. The industry model has altered against them. So that is wrong words. Clean books. Okay, sir. Okay, sir. I withdraw that statement. But I do not withdraw the statement that clean books is very rare in our stock market. So this is one part on industry model. The second part on ChatGPT, much as I love new shiny toys, we actually counseled a lot of cynicism and skepticism to our big spending clients. We said बहुत देखे हैं ऐसे, हमने भी बहुत किए हैं ऐसे as brand managers. There's a concept called NPD risk, new product development risk. So the graveyard of IT development or tech development is littered with sexy innovation. So
Chat GPT is the first. What we need to wait for is the last. So Palm Pilot आया मर गया, Nokia आया मर गया, BlackBerry आया मर गया, फिर वो iPhone आया and उसने इंडस्ट्री मतलब तोड़फोड़ मचा दी. In a way, iPhone was the last, and then it has some imitators like Samsung, etc. Similarly, Yahoo था, Alta Vista था, वो कुछ एक दो और फालतू सर्च इंजन थे. Then Google arrived and it just nuked the industry, and Google was the last. So in ChatGPT, there are many competitors. What we're telling clients is we got to watch for who's going to be the last one. So as long as more and more people are entering, we do, like we got to wait and see how the industry evolves. The third is tech. It's genuinely revolutionary technology, and tech is a bit like fire. So when Google started, in many ways, we thought वो libraries का profit pool खाएगा. Who thought वो आधा industry, advertising industry का profit खा जाएगा. When the iPod launched, it was clear they're going to eat up the music industry's profit. When the iPhone launched, Steve Jobs was clear. First, he's going to eat up the telecom profit. He's going to then eat up, so, and then he's going to create some new categories. So we don't know which industry profit it will nuke. We actually downweighted examples of a platform. So Google is heavily profitable in search. It's unquestioned, god of money printing. But we say ये GPS है, Gmail है, क्या उखाड़ लिया? कितने पैसे बन रहे हैं? पता नहीं. So these additional things have given it power. Like it becomes a very government and CIA and NSA kind of supported entity. But we are not seeing the profit from it. People who built businesses on top of it, like a Map My India and so on, actually built modest businesses, maybe 2,000 crores, 3,000 crores in the India context. It's only in the negative interest rate money printing era. We saw the Olas and Ubers and many such examples come up. But if we don't have a negative interest rate or zero interest rate environment for the next 5 years or 10 years, we don't anticipate ChatGPT will enable the building of such profitable sub empires, because जो tech invent करता है वो he makes sure profit वही खाता है. It's a long kind of answer, but to summarize, number one, the Infosys, TCS, Cognizant, etc. industry model has already altered, and ChatGPT has nothing to do with it in a way. So even if ChatGPT is an incremental labor hiring avenue, it will be done outside these industry structures. It'll be done in the new GCC model. Secondly, we got to watch what ChatGPT does. Everything Amit sir raised as concerns, 100% agree. And so we have like a bunch of slides around ethical concerns, what it does for humans, isolation, the power of propaganda. So, in ChatGPT, if you ask, do fiat currencies last forever? It doesn't give you an answer. So this is a form of propaganda, right? That it's not answering some of the most important questions citizens might have because it's inconvenient for the government. So there are all these questions that will evolve with ChatGPT. But at a paisa dhanda level, we had some anti-hype points of view. I'll just kind of wrap up there. Yes, sir. Okay. ChatGPT initially actually answered many such politically sensitive questions incorrectly. मैंने खुद देखा है वो कभी-कभी biased जवाब दे रहे थे. Then they replaced it with boilerplates, probably by creating an additional model to identify such politically loaded questions. So now it gives a very boilerplate answer if you ask him about like some politician, तो वो एकदम exact same words and phrases will come out for all politicians. Okay. Amit bhai, एक मिनट. In this space of mind, or on any space of mind, there is not much importance given to Nifty, Bank Nifty, and stocks and all that. This is all general knowledge. And believe me, if you have general knowledge, you are a king. If you don't have general knowledge, you are nothing in this market. So it is my
endeavor to collate and collect knowledge from people who are well versed in their sphere. So if you are bored with all this, please leave this space. We'll be better off listening to Nifty Bank Nifty, because that is a place, Nifty Bank Nifty and options, where you will get ruined for sure. Okay, Pradeep bhai बोलिए. Good evening, sir. Good evening. Sir, taking this forward, artificial intelligence and chat GPT. I'll share my inputs and experiences. So, sir, आप तो जानते हैं कि I am first a businessman, then a coder and then lastly a trader. तो 1981-82 में जब मैंने कोडिंग सीखी तो मेरा जो गुरु था वो मुझसे 2 साल सीनियर था, मेरी कॉलोनी में ही रहता था, नागपुर से टॉपर था एंड IIT पवई से भी टॉपर था. ही टॉट मी कोडिंग. उस समय कंप्यूटर का जो मेमोरी होता था वो 100 MB का होता था और 20 MB का उसका रैम होता था. उस समय पे उन्होंने मुझे सिखाया. सो फर्स्ट लाइन दैट ही टोल्ड मी, जब उन्होंने मुझे स्टार्ट किया तो ही सेड कि repetitive jobs in future will be done by either donkeys or computer, and humankind or human mind is there for creative work. So आज सर 40-45 years बाद में भी वो valid है. तो सर चैट जीपीटी रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा, एंड डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग स्टॉपिंग देम, डिले हो सकता है बट अल्टीमेटली होगा. एंड ह्यूमन काइंड जो होगा वो मोर क्रिएटिव वर्क की तरफ जाएगा. जितने भी रेपिटेटिव जॉब्स हैं वो सारे दोज विल बी टेकन ओवर बाय द कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड एनीवन कैन नॉट स्टॉप इट. एंड ह्यूमन काइंड विल इवॉल्व एज अ workforce to do more creative and thinking work. So that is my input. Pradeep bhai, a few words. Yes. The impact on IT industry, not on tech industry, IT industry in India. Yeah, sir. How do you see the future? सर वो इसी में जवाब में आ गया ना सर. जितने रेपिटेटिव वर्क है, ये सर मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ. मेरे वही गुरु जिन्होंने मुझे, भाई साहब हम हमारा IQ लो है नहीं समझते तो पूछते. अरे सर तो सर मैं एक आपसे 8-9 साल पहले की बात करता हूँ. मेरी नीस है, छोटे ब्रदर की बेटी, वो कंप्यूटर साइंस करने जा रही थी पुणे. तो मैंने इन्हीं से पूछा कि हाउ इज द फ्यूचर. ही सेड प्रदीप उसको बोल मत करे, कुछ और चीज करे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के भी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे आगे. सो इनकी डिमांड जो आज 0 तो नहीं होगी, लेकिन जो 10 लोग हैं वो 1 या 2 ही रह जाएंगे. सो दैट इज हैपनिंग नाउ सर. सो वही सब फ्यूचर वही है, जो रेपिटेटिव वर्क का फ्यूचर वही होगा सर. सर आप गोल गोल बात मत करो ना, मेरा सवाल सिंपल है. सर आईटी वाले से जॉब्स जाएंगे सर. नहीं, that is not the question. Question is IT companies will survive or no? Sir, they have to change. अगर सर्वाइवल है तो मॉडल चेंज करना पड़ेगा सर. Okay. Yeah. Got it. Anybody else, or we wrap up? Fact finder, you want to butt in? Modi. हाँ भाई बोलिए. रचित. Rachit, you can mute and unmute and ask or comment. चलो वो नहीं आ रहा है ना.
हाँ सर, he is not able to connect in as a speaker. Fact finder, not interested. बोलिए भाई. नमन, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ओपिनियन. So I have like followed this space for like many time, and I enjoy the topics raised by and answers given by Fact Finder and Mr. Shara also. My query was continued to be from the last time when Fact Finder has told that facts about taxation, that implementing tax indeed our economy is literally bad, but isn't that bad everywhere? Like यूएस में हम लोग देखे तो जेरोम पवेल जो थे, उन्होंने टर्म हॉकिश यूज किया था जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे थे. तो मतलब ये जो है ये इकोनॉमी की, मतलब हमारे इकोनॉमिक्स की गंदी, मतलब वो है थिंकिंग कि जो कोविड के कारण कंडीशंस हुए हैं वो हुए हैं, वो उनको वर्सन किए हैं. क्या मांगता है तेरे को, क्या पूछता है तू, समझ में नहीं आया. सर मेरा क्वेश्चन जो ये था कि जैसे जो टैक्स इन्फ्लेमेशन वाली जो बात होती है कि जो इकोनॉमिस्ट के कारण है कि इकोनॉमिस्ट ने अच्छे से नहीं सोचा, अच्छे से प्लान नहीं किया, हम लोग ने सही जगह काम नहीं किया. तो वही मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे गंदी जैसे जो इंटरेस्ट रेट्स की हाइक्स वगैरह है वो तो हर जगह हो रही है. तो ये पूछ रहा हूँ सर कि स्पेसिफिकली इंडिया ही खराब किया है कि सब जगह यही हाल है. नहीं, इंडिया तो बेस्ट है यार, सब कुछ अच्छा है इधर. इंडिया के जैसा कोई देश नहीं है. अमेरिका माँ बकवास है, कुछ नहीं है उधर. जो कुछ भी है इंडिया में ही है. उधर सब फालतू कंपनियां है, कोक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट. इधर देखो क्या फर्स्ट क्लास है, अडानी है, अंबानी है. उधर थोड़ी है ऐसा सब कुछ. और कुछ नहीं सर. So, Srini, before we wrap up, few things I would like to caution people. Don't catch a falling knife. Stay away. And if you want to catch a falling knife, catch. But buy protection. Without protection, if you play, you will get ruined. I have seen with my own eyes a person losing 50 crores in a month because he did not have protection. I lost 400 crores in 2 days, but that was some another issue, not FNO related. So losses over here are humongous, and except for Zerodha, don't do any online trading with any other broker. Only Zerodha. What happened with this day before or yesterday, वो नहीं होना चाहिए. आप लोग सस्ता ब्रोकरेज में मत जाओ, आपको बहुत दिक्कत पड़ेगा. खानदानी ब्रोकर पकड़ो. ज्यादा ब्रोकरेज लेता नहीं है तो भी बोलो तुम ज्यादा लो, सौदा करो, आपका पैसा सलामत. आप एक 10 पैसे के लिए आपका एक
1 करोड़ का माल जोखम में डालते हो, पागल हो, मैड हो। ऐसे नहीं होता है धंधा। अगर जिस दिन आपको ब्रोकरेज में कच करने का मन हुआ, समझ लेना कि आपको ट्रेडिंग में लॉस है। ओके, एनीवे। थर्ड थिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी मत खेलना, ऑप्शन बिल्कुल ही मत खेलना। 40 जन मेरा व्हाट्सएप पे है, ये पूरा पैसा चला गया। वो कई लोग बोलते हमको मौका दो सर, हम ऑप्शन बेच के कमा के देंगे आपको। मैं बोला यार तू पैसा हार गया ऑप्शन में, अभी तू मेरे पैसे से मुझे जिताएगा, चल फालतू का बात है। फिर बहुत जन बोलते हैं कि हमको पैसा दो, मदद करो, हम दोबारा ट्रेडिंग करेंगे। अब पैसे का बात है, मैं मेरे बेटे को भी ना दूं, सट्टा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं किसी को ना दूं, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को ना दूं। And depending on others is bad. Don't take loans, don't give loans. Another thing, you are doing a job. Why the fuck you play options? क्या चाले तुम्हारे में? Why can't you keep your gambling instincts? ऐसा है तो 3 महीने में एक बार गोवा चले जाओ, मत करो। ऑप्शन में मैं दावे के साथ में कहता हूँ, कोई भी आदमी बोल देवे कि उसने पैसा कमाया है, मैं उसका जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंस्ट्रूमेंट विच इज रैंडम, निफ्टी ऑन रैंडम, you have one more layer and one more layer of option. Actually, it's the fourth derivative. So fourth derivative moves exponentially. How will you make money? Once a way, if your judgment is right, you can. But making it a daily affair and weekly affair, I can assure you, and I wish you all become pauper. Please don't play, yaar. What is the need? तुमको ABC मालूम नहीं है। अगर आपको मैं पूछता हूँ कि निफ्टी में चौथा वेटेज किसका है, आपको नहीं मालूम है, तो क्यों खेलते हो यार? जो चीज मालूम नहीं है मत खेलो ना यार। या गो, या यू वांटेड टू से अगेन? हेलो, बोलिए सर। Gaurav, you can unmute and ask or speak. ओके, नहीं, हाँ बोलिए। Satish ji, you can unmute and ask or speak. थैंक यू श्रीनिवासन जी, शरद भाई, जय श्री कृष्ण। मैं यही मैं 2 दिन पहले जो आपने पेश किया था ना शरद भाई, आई वाज शॉक्ड हाउ द पीपल हैज borrowed money through the credit card. It's a very dangerous credit card. To have it, it is always useful for in emergency purpose or plan way, provided you are able to pay it a timely manner. The person has lost in share bazaar by going for F&O and etc. And also to pay in this one, the credit card wala is very dangerous people. I have seen how people have suffered. So जो शरद भाई ने एडवाइस दिया है, तो इधर तो आई नो मेनी पीपल आर देयर एक्सपर्ट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, जो शरद भाई ने दिया, आई डू सब्सक्राइब। बी केयरफुल इन शेयर बाजार फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ऑल डेरिवेटिव्स, एंड जो अपना जेब जितना लंबा है उतना में ही खेलो, उससे बाहर मत जाओ।
And I want to recognize, though we are both senior people, Sharad bhai and myself, वो 5 महीने पहले बोले था मार्केट क्रैश होने का है, निकल जाओ. I have remembered these words. I'm regularly following, though I rarely come as a speaker. And secondly, very, very important, I'm not talking politics, I'm not talking about Hinderburg. I'm not going to name company's name. It's on record. Sharad bhai has won very high, unbelievable high value stock of that businessman. So I congratulate Sharad bhai for warning all people, educating this thing and forecasting. This is the only purpose to give my this thing, my internal voice में जाहिर करता हूँ शरद भाई के लिए for his warning quite earlier as 5 months back, including that company has fallen from 4,500 in 3,500 to in 3,000 or 800-900 rupees range. Thank you शरद भाई. मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी सब सुन रहा हूँ दूसरा. Thank you. So, हेलो आप बोलिए. हेलो या आप बोलिए. लॉरस लैब के ऊपर कि यू आर लाइक फिशिंग और समथिंग, तो आप कैन यू एलोबरेट मोर ऑन दैट? No. You pay me money, I will tell you. सर आपने Hello. हाँ लॉरस लैब के ऊपर कल लिखा था ना, तो उसके बारे में. हाँ मैं लिखा था something is wrong. ओके, तो कुछ पर्टिकुलर रीजन और समथिंग और जस्ट. हाँ वो अगर आपको जानना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा. पक्का 10 लाख रुपया देना पड़ेगा. ठीक है चलो. नहीं देखिए भाई साहब. हाँ. आपको आप ये क्यों पूछ रहे हैं, बताइए मुझे. नहीं यानी मुझे फंडामेंटली पहले से ही ऐसा लगता है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आपको टेक्निकली या किस सेंस में. नहीं फंडामेंटली आपको क्या लगता है? मतलब कि ओवर वैल्यूड है. ओवर वैल्यूड. Yes, sir. अच्छा ओके. आज शॉर्ट में बता दूं. 2.5 साल पहले 250 का भाव था और 10 पेड़ अप. बराबर. उसका अभी गिन लो 310 का या जो भी भाव है, 1500 का भाव है. 1500. नॉनसेंस है. करेक्ट. नॉनसेंस है. अरे ये क्या है, ये अनसीन वैल्यू और वो सब कबाड़ी बाज है. सब पब्लिक को माल चिटकाता है, फंसने का नहीं है. ये रद्दी में रद्दी स्टॉक है. ओके. चलिए. Shini will wind up. Yes, sir. No requests are there. Yeah. Then I think people should take my advice in proper light, or else I wish you all the best in life with your option trading. In a month or so, you will also WhatsApp me. Please help. Another last thing I want to say. If you have lost everything and you need my help, why can't you approach me before losing money? Why do you come to me after losing? Come to me before you lose. Yeah. What can I do? I cannot give you money. Yeah. That's for sure. That's against my principle. What else can I do? We are fake finder. अभी आता है यार. शरद भाई गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. शरद भाई HDFC बैंक के बारे में कुछ बताइए, और ये मर्जर का और पोस्ट मर्जर का कैसे रहेगा.
bhai. Sorry. Yeah, yeah. How are you doing? Good. So, just made sorry, I was on a train, so I couldn't speak. But Fact finder, somebody has asked a question. I can complete and I'll hand over the mic to you. yeah. Who's asked the question? Esther, I think. He's asking about HDFC Bank merger and HDFC results. Oh, have they come out? I haven't seen it. नहीं results are tomorrow यार तू भी क्या यार No, so I mean, see, the thing is that obviously expectations for HDFC Bank results are very strong because they very strong. See, they come out with a business update, right? And the business update was very strong in terms of loan growth as well as deposit growth. But my worry is that a large part of that loan growth and deposit growth was simply driven by quarter-ending phenomenon. And it's very possible that they disappoint on the net interest margin, and hence NI growth may not be as strong. Having said that, if you look at the loan growth of the system, it's primarily come from commercial and personal, and also from NBFC. To cut a long story short, the market is already building in a very strong estimate in the results. And if the net interest margin numbers are a little disappointing, which potentially could be, then the stock could give up a little bit. And as far as the merger is concerned, I think they will have to continue to grow their deposit. It's a challenge, right? I mean, because a lot of people don't realize this, but if you actually see let's say you have 100 rupees of deposits in India, okay, the average interest rate cost of deposits in India is about 5.5%. So at the end of 1 year, your deposits in the banking system should at least be 105%, 105.5. Now, India's deposit growth is this year is about 110 or 112. Last year it was about 106. So basically, the deposit growth is not very much over. I mean, if you take the last 2 year average, the deposit growth that came incrementally, if you remove the interest income, is only about 2-3%, which is very, very poor, because essentially Indian households are not saving any money because inflation is really hurting them. And I believe this will continue for some more time because interest rates have gone up and people will have to pay higher EMIs. EMIs have gone up by 20%. So I think deposit growth will continue to be very challenging, in my view. Thank you. What about this tax evasion notices? Or this thing is going to affect the price of the bank share, or June there's going to merger, or what कैसा रहेगा future इसका invest कर सकते हैं या दूर रहना है? No, I didn't understand your question. What about the tax? There was a tax evasion news which is coming in the last couple of days. Okay, is that going to affect the share price in the near future? Or then post merger, is there going to be incremental returns for the investors? Do we look at long term or to avoid this bank share? One quick one. Gentlemen, whenever there is a demerger, you gain a lot of money as a shareholder. Whenever there is a merger, you lose money. That is the thumb rule. And the second part, Fact Finder will answer. So if you think about it, let's say hypothetically, HDFC Limited was supposed to merge today, okay, and not merged. Say the merger was called about a little over a year ago. Now today the scenario for NBFCs is
is very bad because essentially discourage investment into insurance. Plus, with the new so this is a big source of funding. It's about 30% of funding comes from insurance and mutual funds. So HDFC Limited would have struggled in this environment. But these rules came out only post the budget. So if these rules were implemented today and after that HDFC Limited was to merge, then HDFC Limited would have got a lower valuation, in my view. Right? Because HDFC Limited also owned a lot of the insurance company. HDFC Limited also owned a lot of the mutual fund. Both got affected during the budget. Right? So, actually, in some sort of way, the merger has taken value away from the original shareholder. Yeah, fact finders are of not audible. A lot of disturbance. The change in regulations that happened during the budget, the people who were original holders of the HDFC Bank, they have paid a higher price for HDFC Limited. Ideally, they should have the merger ratio should have been more in favor of HDFC Bank, but actually, it's been more in favor of HDFC Limited. The second thing is on once they merge, the entity becomes so large that one is that institutional it becomes a challenge for growth. Okay, so I feel that returns will not be as spectacular as some other private sector banks because they are much smaller and they can grow faster for longer. Thank you for thank you for the insights. Thank you. I think there was one person who asked this question about taxation of India and taxflation, right? Yes, I was the one who was asking about the taxation as well. That recent news of the taxation notices to the bank. No, you is can going ignore it. to- Ignore that information. Okay, thank you. So, by the way, I was listening to all you guys about AI and Chat GPT and all of that stuff. Any guesses which is the company with the largest AI team in the world? It's at least amongst the American companies. I don't know about the Chinese companies because, in my view, TikTok's AI is better than anybody else's AI, and also, Alibaba's Tencent's AI is pretty good. I don't know how many of you have heard of this company called Shein, Shein. It's a app which a lot of women shop on. It's actually the most downloaded app in the US. It's more downloaded than even Amazon. So Shein is supposed to have the second best AI engine in terms of technology. But even if you forget about the Chinese, what's interesting, the largest AI coding team in the world is actually lies with Amazon. And apparently, according to a very interesting report, there are only 33,000 AI engineers in the world. That's it.
and 10,000 of them are with Amazon. Okay, I just checked Infosys rate. It's 1236. So, Did you guys discuss IT and results? no, the topic was only results. We were talking about it, TCS and Infosys. So, your quick take on Infi results. No, obviously, Infi results were really bad, yeah, because in the third quarter, Infosys told people that they upgraded guidance, and then suddenly they saw such a massive fall in revenues. It's a little bit surprising because even in the month of early February, they met investors and they told things are fine. So for it to change so rapidly in a matter of 1 month is shocking. Uh, Having said that, my simple point is, I don't know how many of you saw a Twitter thread that I wrote. In short, TCS's earnings growth, I feel TCS's earnings growth will only be 3-4% in FY24. I think analysts will cut numbers. I also think that Infosys's earnings growth in FY24 will also be 5-6%. Usually when these companies 2-year earnings growth is less than 8-9%, these companies used to trade at 18 to 19 times. That's all. So you do your own math. I've told you what the P multiple used to be when these companies used to grow so slowly. You can figure out whether stocks will go up or fall. But typically in history, if companies grow earnings at 3 to 5%, stocks don't go anywhere. They derate and they don't go anywhere. At 12-13%. What is 12-13%? P, 12-13 P. No, not 12-13. 12-13 P is a little low, but I would say there's nothing that stops it from going to 15 P, but 18 P is where I think people are comfortable with. Yeah, we are a country of fools anyway. Yeah, I had one interesting insight on ChatGPT and all that. Yeah. One thing is, see, initially, I think ChatGPT will actually help Indian IT companies because it will increase their ability to code. So the same coder, okay, can do a lot more work, right? So that IT companies might actually not see as much. In fact, they might not have to recruit too many people because the efficiency with which you can code and test will improve because IT coders will start using ChatGPT. Okay, so that's one efficiency gain. But of course, with time, you might not require too many low-end coders, and as a result, at the end of the day, these IT companies will have to. There will be very aggressive price cuts, and when there are price cuts, revenues don't grow as well. I'll give you a very important example. Everybody used to say back in 2014 when digital and cloud took off that the average revenue per IT employee will go up a lot. It did not. Everybody said because of digital and cloud and automation, IT services companies' margins will expand. It declined. So my point is, ChatGPT initially will help IT companies, but over a period of time, there will be a problem in pricing, and there will be a problem in revenue growth, and there will be a problem in employee addition. Okay. KU, who's this? Kuldeep Saharan. Please unmute and speak. Kuldeep.
नहीं बोलना है. Why did you ask for the mic, Kuldeep? Now some random thoughts. Any? Sir, मेरे ख्याल से the export of IT services will drastically come down for in an Indian segment, and there will be a lot of software companies and software services will affect in the near future. So I want to stay away from IT enabled services. So I just wanted your outlook on that. How is that going to decline? Is it real that the world market may come down on our services of Indian companies, and that's going to affect the future a lot. And all Indian companies across the world, not only India, across the world, there will be a decline in IT efficiency. So, ये मेरा ख्याल है. I just wanted to input from No, your I side. said no. PE 12-13 हो जाएगा अभी. It comprises everything. Correct. And उसका Indian पे भी effect गिरेगा. ना ही Yeah. Nifty, no BSE. Fact finder. I was able to read the headlines only because I can't read. That Indian exports in doldrums. तो क्या हुआ क्या? No, where have you read this Indian exports in doldrums? Yeah, either in Economic Times or Business Standard. Sorry, I haven't read the article, but the thing is, I rather than looking at pure exports, and that is the problem with this current government. They keep looking at one number and not the other number. Okay, first of all, services is a completely different business. IT services exports has been happening in India for the last 25 years. Okay, it was created mostly from the south of India, where education levels are generally higher. Okay, so the thing is that to give any credit to this government from services is all bullshit. No. Let's not get into the government bashing. No. Let me finish. Earlier, we used to only look at merchandise, net merchandise, import or export. That is the right way of looking at it, because services is an organic business. It's simply growing because of our labor force and our educated people. While merchandise is what government policy really helps in merchandise exports and and imports, and that's what we should focus on, whether we are doing better on that. And on that front, while exports are rising, imports also are rising a lot. A lot of people. So if you look at finally, if you look at one simple number, which is current account deficit, we are at $270 billion in the year FY23. I think, if I remember right, it is about 50% higher than FY22. Okay. Now, of course, FY24 should be better, hopefully. But I just want to let you know that the right number to look at is net, and don't look at gross. Because, for instance, if the price of gold goes up, then our imports of gold go up, but also our export of gold go up. Because we do a lot of jewelry, we export that. We do a lot of diamond polishing, we export that. So don't look at just export number, you have to look at net exports. Likewise, for example, mobile phones, we import a lot of mobile phone components, do about 4% value add. So suppose the price of the handset is 100 rupees, the value we import 96, we add 4%, and then we export it. So instead of looking at, our mobile exports have become so much, we have to look at net. Net is a very important number. Last point I wanted to share, in the last 2 years, there's a big pickup in global services for companies. And the reason that has happened is because COVID has proven to everybody that you don't need to be working from office. You can work from anywhere in the world. So because of that, a lot of the global companies have started their offshore centers in India. I got the newspaper. It says exports contract most in nearly 3 years in March. What? Exports contract
See, the thing is, Sharadji, the problem is that if you're looking at it, are they talking about goods exports or they're talking about goods and services? What are you talking about? I am not talking, it's in the newspaper. Sorry, I'm driving. I can't see the newspaper, so I don't know what. तो अपने बात कर देंगे. No problem. Okay, Anna. Anna, क्या नाम है भाई? आनंदा सरकार, बोलिए. Good evening. बोलिए. Well, actually, my question to Mr. Fact Finder, there is any scope for like happiest mind or latent view to work in artificial intelligence space in future, and can these companies have a do they have a good future in this space, artificial intelligence domain? See, I think I said honestly, I have not done enough of work on it. But let me just tell you something very interesting that I read today. So there is something called Auto GPT. Okay, and there is some where GPTs of various kinds, AIs of various kinds, start interacting with each other. Secondly, Amazon has created a platform where any company can pretty much create their own AI. Okay, the way I see it is in about 5 or 10 years time, each of us, me, you, Sharadji, Idi, anybody is going to have their own GPT for themselves. So honestly, I don't know where it's heading, because there could be so many forms of AI that you do not know who will win. And one more thing I forgot to add. See, when AI is going to become so pervasive, what's going to happen is all the corporates will implement AI as well within their firm. Okay, so that will require the implementation help of IT companies. So remember cloud, when cloud took off, there were a lot of companies that had to go for cloud implementation. Likewise, when AI takes off, a lot of companies will try and go in for some sort of a AI implementation. So that will also increase the scope of IT services temporarily. Okay, thanks. नहीं, और दूसरा बात है भाई, रेन देना भी ऐसा ट्रबल टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यूज, चुपचाप बैठा रहना, काय को पैसे का माँ बहन करने का है, बैठो शांति से. See, the market will give you a clue. At that time you act. Don't act according to your brains. Act according to the view of the market. Okay? चलिए, तेजस भाई. Hello, Saraj sir, Srikimasu and Fact Finder. Thank you so much for giving me opportunity. So, am I audible, right? Yes, yes. तो एक मैं बात करना चाहूँगा. मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ हेक्सावेयर कंपनी में. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है और वो फैक्ट फाइंडर से मैच करता है बेस्ड ऑन चैट जीपीटी. तो सर उसमें बेसिकली पहले क्या होता था कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं एज ए प्रोग्रामर कोई लाइन मतलब कोड लिखता हूँ, तो वो सीधा कोई अप्रूव नहीं करता. मतलब मेरे ऊपर 2 डेवलपर की एक पैरेलल वॉच होती है कि भाई अगर मैंने कुछ भी कोड लिखा तो उसको प्रूव करना है कि भाई ये कोड सही से चल रहा है कि नहीं. तो यूजुअली उसको हम जनरली प्रूव कैसे करते हैं कि हम टेस्ट केसेस लिखते हैं कि भाई ये कोड है, ये फनल में जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ऐसे आउटपुट आएगा. तो उसमें क्या है सर, बेसिकली जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे का कोड मैंने लिखा, तो उसमें समझ लो कि 10-15 मिनट आपने कोडिंग में किया और मोस्ट ऑफ द टाइम है ना आपका कोड का टेस्ट लिखने में जाता था. तो अभी चैट जीपीटी आने से क्या हुआ है, जैसे समझ लो कि मैंने एक पर्टिकुलर 50 लाइन का कोड लिखा है, तो मैं सीधा चैट जीपीटी को सीधा मैं ये फंक्शन ही प्रोवाइड करता हूँ कि भाई चलो मुझे इसका टेस्ट केस लिख के दो. तो इसके जितने भी ऑप्शन है, जैसे समझ लो 5, 6, 7 टेस्ट केसेस लिखने हैं, वो सीधा मतलब विद इन अ सेकंड्स वो टेस्ट केसेस लिख कर देता है. और मैं बताऊँ सर, इट इज
almost 99% correct. 99%. You have to just adjust it according to your requirement. तो सर आप समझ लो कि प्रोडक्टिविटी में हमारा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम लोग अभी पहले क्या करते थे कि भाई टेस्ट केसेस लिखने का एक स्पेसिफिक टाइम देते थे कि भाई आपको 1 घंटे का काम है तो उसमें से आपको समझ लो आधा घंटा तो टेस्ट केसेस का ही अलोकेट कर दो, है ना। तो अभी क्या हो गया, हम लोग टेस्ट केसेस का टाइम अलोकेट ही नहीं करते। बेसिकली अगर आपने 1 घंटे का कोड किया ना तो आपका 5 मिनट में टेस्ट केसेस मतलब जनरेट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका 8 घंटे का काम है तो हम लोग 4 घंटे तो टेस्ट केसेस लिखने में इम्प्रूव करने में जाते थे। तो अभी क्या है वो इम्प्रूव हो गया तो वो हमें लगता ही नहीं टाइम बेसिकली। तो ओवरऑल अभी फैक्ट फाइंडर की बात से मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि एज ए डेवलपर दूसरा एक एडवांटेज हमें ये भी है कि सर हमें अगर कोई एरर आती है तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने में या ढूंढने में स्टैक ओवरफ्लो में कई और थर्ड पार्टी साइट पे ढूंढने में ही टाइम चला जाता था पूरा। अभी के केस में क्या हुआ है, सबसे पहले अगर एरर आती है तो हम गूगल में जाते ही नहीं, हम सीधा चैट जीपीटी के टर्मिनल में ही पेस्ट करते कि भाई ये एरर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रियल आंसर सही करता है। इसके ऊपर एक एडवांटेज है कि एक टाइपस्क्रिप्ट करके एक टाइप्स आते हैं, मतलब आपको अगर कोड लिखा है तो एक टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसकी, सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट, तो अगर उसको भी लिखना है ना तो सर हम चैट जीपीटी में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात से सीरियसली एग्री करता हूँ कि डेवलपर की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि आप समझ लो कि आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है, कोडिंग असिस्टेंट ऐसा लग रहा है। और पहले की जो लाइफ थी हमारी एज ए प्रोग्रामर लाइफ, वो बहुत डिफिकल्ट थी, उसमें टेस्ट केसेस लिखने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे बिकॉज ऑफ दी फ्रेमवर्क्स, एडवांस फ्रेमवर्क्स। अभी ये हो गया कि आप फ्रेमवर्क का नाम दो और आप अपना कोड भेजो, इट विल इंस्टेंटली गिव यू टेस्ट केसेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेवलपर। तो लाइफ बहुत इजी हो गई है सर, बस जस्ट यही कहना था। और चैट जीपीटी विल टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो इसमें बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी आती है सर। मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं देखा इतना इम्प्रूव होते हुए। और इसका सर मॉडल जो है उसमें जो डेटा इंजेस्ट किया हुआ है, जैसे समझ लो कि अभी 4th मॉडल आया है, तो उसमें मतलब आप समझ लो कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट की भी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारा एडवांस जितने भी वर्जन्स आते हैं, मतलब आप जितना भी एडवांस है ना वो ऑलमोस्ट वो लोगों ने इंजेस्ट कर दिया है। तो आप एज ए डेवलपर आप उसको ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते कि उसको नहीं आता हो, मोस्ट केसेस में उसको आता है चैट जीपीटी को। तो इट इज रियली हेल्पफुल और ये लाइफ चेंजिंग होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज आई एम डैम श्योर। और तेजेश भाई, तेजेश भाई, हाँ सर, तेजेश भाई, ये आपने समझाया कि इट eases your life, it helps you. But what would be the impact on the organization? हाँ सर, ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई ओवरऑल क्या है कि एक डेवलपर जो उसकी लेजीनेस थी टेस्ट केस लिखने में वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर उसकी जो नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, whether they will reduce people or not. हाँ सर, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे समझ लो कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट केसेस लिखने के लिए आप समझो कि कोई डेवलपर है तो उसकी जो मेन स्किल है डेवलपमेंट है, लेकिन वो टेस्ट केसेस अच्छी तरह से नहीं लिख सकता, तो उसकी तो पर्सनली इम्प्रूव हो रही है स्किल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है, काम जल्दी खत्म हो रहा है, तो आप कम रिसोर्स में भी काम करा सकते हो। जैसे आप पहले 5 डेवलपर से काम कराते थे, अब 3 डेवलपर से काम हो जाएगा, तो वो इम्पैक्ट तो 100% आएगा उसमें। मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अगर किसी ने वर्कफोर्स भी काटा ना तो बिल्कुल वैसे भी सही चलेगा। Sharad ji, just to answer your question, okay, and I used to be a programmer myself, okay. I think what will happen is initially productivity will go up, but need not. What will also happen is that companies will pass on these productivity benefits to their customers. So as a result, pricing will come down. Okay, that is a problem. And the smaller companies,
will be more aggressive in pricing. Okay. So because any high growth company says, okay, I want to grow faster, they'll be more aggressive in pricing. That to my mind will be a negative for the sector, because then for the same amount of revenue, you have to win a lot more projects. Sir, I am done from my side. You can remove me from speaker. Yeah, Tejas, that was very helpful. Thanks a lot. Yeah, sir. Yeah, anytime. Thank you. Kuldeep ji, you can unmute and ask. Oh, sorry. So, Saurabh, yes. गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब रिगार्डिंग के अभी ये तो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था कि वो नाटो में ज्वाइन ना करे, अभी फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, तो विच इज वेरी क्लोज टू क्रेमलिन, और वहाँ पे आर्टिक सर्कल में बहुत जबरदस्त मतलब डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो हाउ दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी, और दूसरी बात है हाउ द हेज फंड्स, बिग हेज फंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू इट, और हाउ ये जो यूएस मार्केट है, और ये इनको तो पता ही रहता होगा एडवांस में कि कहाँ कौन डिप्लॉय हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये कैसे रिएक्ट करनी। ये तो अर्निंग सेशन, तो ये तो सबको पता है कि जो जनवरी से लेकर मार्च के अंदर जिस क्वार्टर में जो हुआ है रिसेशन की वजह से खराब रिजल्ट है, ये तो बस वो मार्केट गिराने के चक्कर में है, वो उसे ट्रैप करने के लिए है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये मतलब ये जियोपॉलिटिक्स कहीं और घूम रहा है, या तो फिर बस हमें बस ऐसे हवा में घुमा रहे हैं, या फिर अचानक से कहीं अभी फ्रांस जाके चाइना से मिल जाता है और बात करता है टेबल पे आने के लिए, या तो अचानक से सुबह उठेंगे बोले नहीं सब ठीक हो गया। मतलब ये सीन क्या चल रहा है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे रखें। Sharad ji, you're planning to talk? Are you there? Sharad sir, you want to respond? Or fact finder, if you have a view. See, I'll just tell you very quickly. One is that I don't think people are positioned. You asked about hedge funds and all. I don't think people are positioned for any major war scenario. Let me give it in perspective. In January 2022, before the Russia-Ukraine war broke out, there were a couple of global strategists who actually warned that, based on their analysis, there was a lot of people, Russian forces that were surrounding the border of Ukraine and were getting ready to invade Ukraine. But the market did not, completely ignored it. And this guy had written this report in January 25. The war broke out in February 25, 1 month later. Till the war broke out, nobody took it seriously. So I feel that the same thing will happen out here. Like, people are worried about, China and Taiwan. So I feel that markets will react incrementally rather than position for that. The second point is, as far as the earnings season in the US, yeah, I think, some of the incremental, I think there will be some bit of earnings downgrades for sure. That's my view in the US. And one thing that one needs to remember is that the M3 in the US, which is to my mind the most important number to watch, is continue to decline. A lot of people focus on the federal balance sheet. I wouldn't focus on the federal balance sheet. I would focus on M3, because that's the money in the system. If the monetary base declines, credit declines, business activity declines. So that's just my view that I want to share. I'll be cut off. Okay. Who's next? सर और एक क्वेश्चन था कि अभी जो काफी लोगों को शायद पता ही होगा कि आर्टिक रीजन में मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैसेस एंड लिथियम और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है दैट इज 1/4 ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो रशिया वाज
planning for this for last 1 year, and अरे suddenly this is सर ये सब जनरल नॉलेज इधर नहीं, शेयर बाजार का कुछ है इंडिया का। Now, connected to the share market, Warren Buffett has completely disinvested from Taiwan superconductor. सर वन मोर थिंग कि सडनली लास्ट 1 week और 10 days के अंदर ये फर्टिलाइजर सेक्टर में इतना ग्रोथ सडनली इतना प्राइस हाइक क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंड सडनली दिस केमिकल सेक्टर लाइक दे आर जंपिंग लाइक 10 पर अपर सर्किट, मतलब कुछ एक्सपोर्ट होने वाला है या मतलब क्या न्यूज़ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से ये केमिकल और ये फर्टिलाइजर सेक्टर में इतना बूम क्यों आ रहा है सडनली विद इन लास्ट 5-6 सेशंस? अच्छा लाइक हाँ, रिजल्ट आ गया क्या? नहीं सर, किसी का रिजल्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ तो फिर अभी देखिए अपने सुन मेरे भाई, ये स्पेस जो है ना, जो रिजल्ट आ गया उसके बारे में है। हम लोग प्रेडिक्शन की दुनिया में नहीं बैठे हैं, और ये फर्टिलाइजर सब कचरा पट्टी है। आपको ही मुबारक हो, जाना मत, मर जाएगा। अच्छा देख के ले लेगा ना, मर जाएगा। चलो About this China and US face off, I was saying that Warren Buffett has completely disinvested from Taiwan semiconductors. He's taken out all his money, and he has made a statement that he suspects that US and China का कुछ होने वाला है. Otherwise, he would not take his money out overnight. So that is the only hint. And already US troops are in Taiwan, and whatever forces are there. So it's a very tense situation. But होने वाला शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर हुआ तो there's gonna be ramifications, terrible. अरे इंडिया में कुछ नहीं होगा यार। इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो जनरली मार्केट की इंडिया का ही बात करो ना। इतना तो इंडिया पे असर पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा, तो अभी आईटी की आप बात कर रहे हो अमेरिका का, तो इंडिया पे असर पड़ रहा है ना? नहीं पड़ेगा। चलो एनीवे, विप्स, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, नथिंग। No, I know. It's the best place to be. I'm telling all my American people, you better come to India. उधर क्या रखता है? Yeah, means my age, retired and whatnot. So they're saying where else to go? I said, भाई अपना देश है, आ जाओ. Okay, yeah, okay. Anupam. Good evening. Good evening, Sharad ji and Fact Finder, and very good evening to everyone on the space. I do not have a technology background, but I work with a ITS company, and we are definitely going to achieve the top line of $1 billion this year. That's the second call out. Couple of my takeaways on the IT industry, ITES space. See, I heard, I think Tejas or somebody saying about ChatGPT, and definitely that's creating a lot of buzz. But the ground reality also on the other side is, with my two and a half decades of experience, still basic technology around OCR, ICR data extraction is nowhere more than 80-85% successful. And within that also, all these companies who have launched the products around ICR, OCR, which is basically extracting data from structured, unstructured documents to digitally process the information. They also create templates and it goes through machine learning and all. So the reality is that the IT companies also have now ITES under their umbrella. As an example, recently I got to know even Mindtree has a BPO. So there is a lot of business in the market globally. India will continue to get business, both IT as well as ITES. The small size companies who are evolving better in terms of pricing, quality, and customer resilience will become even more bigger in that sense. But again, the giants are also there. So ChatGPT will be there. It may streamline and make things a little bit more automated, but it is not going to change the whole industry turnaround in a sense where productivity shoots up by 30 to 50%, or quality of work improves dramatically to, let's say, 99% DPU plus, etc.
Thank you. Oh dear. AM. हेलो Yeah. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सर जब हम वहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ट जीपीटी तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में मेरा कहना है, बीइंग एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, ये तो एक इन्वेशन है, नया इन्वेशन आ रहा है। तो इंडस्ट्री में हम लोग बोल रहे हैं कि अभी ठीक है कट ऑफ होगा, जो कुछ एम्प्लॉय हो कट हो गए, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है ना इंडस्ट्री के अंदर, कि जबकि उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो जाएगी, जो कि एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाएंगे, तो इसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं क्या? लॉजिकली ये बात आती है, तो इसके ऊपर आपको कुछ कहना हो तो। देखिए भाई साहब जी मुझे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का कुछ नहीं मालूम है, जस्ट वो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से नॉलेज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना ग्रोथ है और 3%, 2%, 4%, उसमें इतना पी नहीं हो सकता। जी बस दैट्स माय टेक ऑफ द रिजल्ट। ये चैट जीपीटी वो सब तो अपने ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। मुझे एक लैंग्वेज आती है कंप्यूटर की, वो है फोर्ट्रैन, वो कार्ड पंच होता था, वो लैंग्वेज आती है मेरे। तो इतना वो पुराना हो, इतना जूना हो, कुछ नॉलेज नहीं है। द पॉइंट बीइंग valuations will come down drastically. If that is what I think, and I think you are asking the same thing, right? यस सर। दूर रहो ना भाई। नहीं सर, ये अभी के लिए तो दूरी है, अभी के लिए तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सेकंड टॉप बन के सब नीचे आ जाएगा मार्केट, जो तो ऊपर आ रहा है अभी। तो ये तो सब टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे चल के जैसे कि अभी 6 महीने आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे आगे चल के ऐसा लगता है कि ये जो सेफ सिनेरियो है ना, तो ये इन्वेंशन है, इसको तो आईटी कंपनियां अडॉप्ट कर लेंगी, शायद एम्प्लॉय भी कम हो जाएगी, लेकिन इनका कुछ नए तरीके से काम शुरू हो जाएगा, तो वहां पे आगे चल के इनको फायदा हो सकता है। बस यही एक बात तो समझ में आ रही थी, ऐसे लॉजिक लग रहा था। अरे भाई साहब, संसार में परिवर्तन होता है, अच्छा ही होता है, सब कुछ अच्छा होता है। ओके सर। और एक साथ किसने देखा है यार? मुझे मालूम नहीं है कि मेरा अगला श्वास आएगा कि नहीं, और आप बात करते हो 1 साल की। यू गेट माई पॉइंट? जी सर। और लाइफ में ना एक बात ध्यान में रखना भाई, पास्ट यूजलेस, फ्यूचर यू डोंट नो। सही है। जस्ट स्टे एंड एंजॉय द प्रेजेंट। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आई होप यू मजा करो, बाकी सब बकवास। चलिए सोम, थैंक यू सर, थैंक यू। या कुलदीप, Steady or not speaking, Kuldip? Akhil? नहीं। HIM? Himanshu ji, you can unmute and ask or speak. या कुलदीप बोलिए। चला गया। जैसा कि फैक्ट फाइंडर सर ने बताया, चला गया वो फैक्ट फाइंडर चला गया। हाँ सर, उन्होंने बताया जैसे कि वो चैट जीपीटी के आने की वजह से आईटी इंडस्ट्री में एक नया छोटा सा वो बूम आएगा, और वो बूम आने के बाद वो धीरे धीरे वो फिर से वो स्लो की तरह हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरा जैसा मानना है कि जो मैं इकोनॉमी जहाँ तक समझ रहा हूँ, तो ये दोनों जो है स्लो और ग्रोथ एक दूसरे का प्रोपोर्शनल फैक्टर है। अगर कहीं पे ग्रोथ आएगा चैट जीपीटी की वजह से, तो धीरे धीरे वो एक स्लो प्रोग्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि गूगल क्लाउडिंग की वजह से हुआ,
तो बिल्कुल चैट जीपीटी की वजह से एक नया सिस्टम है वो बिल्कुल आएगा, उसके बाद वो फिर स्लो हो जाएगा। तो आईटी इंडस्ट्री में अभी वो मौका है और बनने वाला है, आने वाले मई या जून तक मुझे लग रहा है कि इसको अच्छे एक वैल्यू पे आ जाएगा और वो खरीदने लायक है इन्वेस्टिंग के पर्पज से। बिल्कुल, थैंक यू शरद सर। ऑल द बेस्ट। ले लो, आपके लेने के बिना दुनिया डूब जाएगी, आप नहीं लोगे तो। ले लो, पकड़ लो। कुछ मालूम नहीं है अपने को काय को पकड़ने का। अखिल बोलिए। अखिल, Srinivasan, will wrap up? Yes, sir. No more requests. Okay, thank you. Thank you everybody for tuning in. See you next Friday. Yes, Ash, you want to speak something? Yeah, sorry, sir. Can I say something? Yeah. हाँ बोलना भाई. I mean, it's like, okay. First of all, sir, just want to शरद सर का एक appreciation करना चाहूँगा कि like in politics, there is a Chanakya Sharad Pawar ji. Like in our share market, there is a Sharad Shah uncle. अरे नहीं. Chanakya of the market. Basically, आपसे सर इतना कुछ सीखने मिल रहा है कि जो रियलिटी जो मार्केट की है, जो कहीं पे बुक्स में भी लिखी नहीं रहती, कोई बताता नहीं है, कहीं पे यूट्यूब वीडियोस तो सब तो जाने दीजिए, बट जो एक्चुअल जो सिनेरियो जो मार्केट में चल रहा है, जो आज की तारीख में आप मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसे हार्डली इंडिया में 500 लोग ही रहेंगे शायद, जो जिन्हें मार्केट का इतना डीप नॉलेज। आई मीन, आप तो सब का बड़प्पन है कि सर आप शेयर कर रहे हैं, तो सर थैंक यू सो मच फॉर दी शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर थॉट्स ऑन दी मार्केट। इट विल हेल्प। आप थोड़ा भी बताए तो हमें बहुत व्यू मिल जाता है आगे का प्रिडिक्शन। और प्रेडिक्शन बेवकूफ लोग करते हैं। ओके सर। चलिए सर, एक आईटी में एक मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू। बेसिकली आई वांट टू जस्ट शेयर माय व्यू विद एवरीवन दैट आईटी में देयर विल बी अ डाउनफॉल विल कमिंग। आई बिलीव दैट बिकॉज we have never seen in last 5 years, we have never seen there is a bad result in IT. And if you see the valuation and the stock price of the IT industries, double triple पैसे तो बन गए 5 साल में। Now there will be some downfall expected and result will be the reason, because 5 साल 6 साल और कितना continuous valuation इतनी अच्छी नहीं रह सकती कोई भी चीज। That's what I believe. Yeah. Thank you. So we wind up. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Srini. Thank you, Pradeep bhai. Thank you, everybody. Bye.